ते पंजातना सोना पंजातना दी पाकर भिटजा भिटाई भिटते बसे वो भिटजा वो मुझू तो पूजा वो मुझू तो पूजा भिटजा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है डॉक्टर अयूब शेख के तो मेहरबानी करे माइक्रोफोन ते अचे ऐं आर्ट्स काउंसिल की तरफा असांजे मेहमाननि जी आदरबाह करे। अयूब शेख। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जी सिंध सब खवल ताऊं मुबारकबाद थो ॾियां। सिंधी कल्चर जे इंतहाई अहम सरगर्म ऐं हॾॾोखी कारकुन ऑफिसर साईं अब्दुल हमीद आखून साहब जन खे वो हलंदे 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 अहिड़ा प्रोग्राम कराईंदे हाणे अब्दुल हमीद आखून ऐं क्वालिटी ॿई गॾु थी विया आहिनि। अॼोको प्रोग्राम बि उन मंझां हिकु आहे। ऐं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उनजो सदर, रस्ते ते ट्रैफिकूं आहिनि, धरना आहिनि, सिंध ते कब्ज़े जूं ॻाल्हियूं आहिनि, सो रस्ते ते अचे थो। ऐं मां सभिनी खे दिलि जे गहराइनि सां आज्ञा थो कयां, अवां असांजो एतबार आहियो, अवां असांजो एतमाद आहियो। शल सभु ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू। अयूब जल्दी जिन छॾाई मूं वटि जॻो काग़ज़ आहे पढ़ण जे लाइ। ख़वातीन हज़रात भली करे आया। जॾहिं मूं नौकरी शुरू कई तो मूंखे टे दोस्त मिलिया। हिकिड़ो आउटस्टैंडिंगली अनप्रिडिक्टेबल, a loose cannon, but a wonderful artist. Not a good friend, but a good friend, Zafar Kazmi. The other friend I got was Mumtaz Mirza. He held me by my hand and took me through the labyrinth of Sindh's culture. It's, I think, now more than 30 years that he left us. And the third friend was Jalil Qazi. I've lost my two friends and I now have only one friend, which is Jalil. Pir Husamuddin was, of course, a guide, a philosopher, and a lot more than just a friend. Jalil and I were the other day discussing as to how life has gone by, how friends have departed, and we came to this conclusion of Umar Khayyam's couplet, into this world and why not knowing, or like water willy-nilly flowing, or like wind along the waste, I know not willy-nilly blowing. I am grateful to our speakers here. They've been very kind, and I feel a pygmy before this sterling cast of scholars and speakers. And this is thank you very much to all of you for joining me. Shabnam Virmani's book is being launched today. I wanted to launch it a long time before back, but then we had a problem. Books were stopped from coming back here. याद आयो हिकिड़े ज़माने में इम्तियाज़ काज़ी साहब हिते वेठो आहे। जॾहिं इम्तियाज़ साहब AC हो भिक्षा त अलाए तव्हांखे यादि आहे या न। मार्शल लॉ जो ज़मानो हो। पीर हुसामुद्दीन खे असां तकरीर ते सॾियो। पीर साहब ॾुखियो स्पीकर। सो जॾहिं तकरीर करण आया त आऊं ऐं मुमताज़ हेठि कुंड में फर्श में वेठासीं त मूंखे ॾिसी चई मानी ॾाढी सुठी खाराई अथई, पर हाणे ॾे मूं। जेको कुझु चई सघियो पीर साहब सो तकरीर में चई वियो। ॿिए ॾींहुं इम्तियाज़ मूंखे फ़ोन कयो,
उन्हनि ॾींहंनि में बादशाहनि जी हुई। उन्हनि चयो त हिन छा चयो आहे इहो ॿुधायो। इम्तियाज़ मूंखां पुछियो त हीअ तक़रीर मुंहिंजो मूं वटि ताई कान्हे। इम्तियाज़ चयो तव्हां रिकॉर्ड कयो नी? मूं चयो न, मूं रिकॉर्ड न कई, असां त रुॻो म्यूज़िक रिकॉर्ड कंदा आहियूं। पर हाणे शुक्र आहे त हिन खुले माहौल में माण्हू ॻाल्हाए सघे थो, तक़रीर करे सघे थो ऐं पाण में वेही डिस्कोर्स करे सघूं था। त मूंखे रुॻो हिकिड़ो सुवालु आहे असांजे इन्हनि पढ़ियल लिखियल महिमाननि खां, त वॉट इज़ लतीफ़? इज़ ही अ पोएट ऑफ लव? इज़ ही अ पोएट ऑफ पेन? इज़ ही अ पोएट ऑफ होप? छो ॻाल्हियूं त हर क़िस्म सां थियनि थियूं, पर वॉट इज़ ही एक्चुअली? वी ओनली नो हिम एज़ लतीफ़ एंड वी नो हिम एज़ ससी, सोणी, मेहार, बट वॉट डज़ ही गिव टू अस? इहो छो आहे त सिंध जो जेको बाशिंदो आहे सो हुनखे ॿुधे थो, होॾां वञे थो, हुनजे ज़हन में छा आहे इहा ख़बर न आहे, पर तंहिं हूंदे बि हू हर तरह सां कोशिशि कनि था त लतीफ़ खे हर तरह सां अक़ीदत पंहिंजी बरखा कनि। अयूब हींअर थोरी देरि पहिरीं चयो त गोड़ पियो थो हले सिंध ते कब्ज़ो। मुंहिंजो ईमान आहे त जेसिताईं शाह जी दरगाह आहे ऐं शाह जा रागाई आहिनि तेसिताईं सिंध खे लोॾो न आहे। ऐं जे लोॾो आहे त असां मां आहे, छो जो असां अञा उहा शइ परखी न आहे त हीअ आहे छा, सिंध छा आहे, लतीफ़ छा आहे। पर इहो कमु मुंहिंजो न आहे। ऐं आउं हाणे गुज़ारिश कंदुसि ॿियनि दोस्तनि खे, गुल हसन कलमती साहब खे ऐं रहमान गुल पालारी खे, इहे ससी जे हवाले सां कोहिस्तान जो जेको मुंहिंजो सफ़र आहे उन जे बारे में ॻाल्हाईंदा ऐं हिकिड़ी स्लाइड प्रोजेक्शन आहे हुननि जी। हिकिड़ो आउं अर्ज़ु कंदो हलां त वक़्त जे हवाले सां जे मुख़्तसिर रखिजे त वधीक बहितर थींदो। अचो, महिरबानी। बंभोरा बहार थी अमड़ मुंह उमान, असां तो रिहान मोटी का मस थे। सभई सुञाण जीअं लतीफ़ ऐं जीअं लतीफ़ जी ॿोली, जीअं त असांजो अॼोको जेको ही जोखाए ते पंध वारो मौज़ू ससीअ जी वाट जे हवाले सां आहे। इहो ससी जे वाट तां वेही इहो क़दीम पुराणो ख़ुश्कीअ जो वापारी रस्तो जंहिंखे ॾिसिजे त बलोचिस्तान जे ओलहि पासे खां अॻिते निकिरी थो वञे, जे वरी हिन पासे अचिजे त सिंध जे सूर्य नमस्कार वारे पासे खां अॻियां हलियो थो वञे। इहो ओलाकन वारो रस्तो जेको अॼु बि सवे मेलनि में मौजूदु आहे ऐं इस्तेमालु हेठि आहे, इन मां केतिरियूं ई ॿियूं वाटूं घस निकिरनि था जेके हिन वक़्तु बि असूअनि लाइ ओखा आहिनि। जीअं वाटूं वीह थियूं, को ॼाणा केही विया, ससी बि आहे इन ई रस्ते वारी वाट वठी बंबोर खां पुनूअ जे ॻोल्हा में निकिती त हिन रस्ते जो काफ़ी हिसो ससीअ जे वाट जे नाले सां अॼु बि मशहूरु आहे। इहो इन करे त जेकॾहिं इन ई वाट सां वञिबो त अंदाज़नि सिंध ऐं बलोचिस्तान जे अंदरि 20 खां बि मथे अहिड़ा निशांबर ओञाण
जेके ससीअ जे हवाले सां सिंध जे ठटे मलीर ऐं बलोचिस्तान जे हब विंदर उथल ऐं लसबेले वारे पासे मौजूदु आहिनि ऐं उनखां सवाइ 25 अहिड़ा माग जेके शाह लतीफ़ पंहिंजे बैतनि ऐं वायनि में इस्तेमालु कया आहिनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त जीअं वेहड़ आहे, ललो आहे, पांवारो जबल आहे, वणकार वारो पट आहे, लंबू जबल आहे ऐं ॿिया बि के अहिड़ा माग अंदाज़न को 11 अहिड़ा माग आहिनि, बल्कि 12 जेके शाह जो रिसालो सहींदड़ आलमनि खे बि सम्झ में नाहे अची सघिया। आउं का उन्हनि ते मयार नथो रखां, इहो इन करे जो इहे इन पटनि ते गठा कोन ऐं आउं 30 सालनि खां इन्हनि मागनि जो अखी ॾिठो शायदि बि आहियां, पर ख़ासि करे इन्हनि 5-7 सालनि में ख़ासि करे सिंध जे पासे जेका इन्हनि निशानियुनि तोड़े इन्हनि मागनि सां जेका भींग थी आहे, अधो अधु माग त मिसारजी चुका आहिनि। बाक़ी जेके बचा आहिनि उहे बि शायदि जीअं स्टील मिल खे तव्हां ॾिसो पोर्ट कासम आहे, ही सीपेक पियो अचे ख़ासि करे ठटे वारे पासे खां हितां बंबोर खां, या बहिरा टाउन जो जेको राकास आहे, इन्हनि खे त सनद मिलियल आहे इन्हनि जे भेल करण जी। सनद ॾियण वारो केरु आहे? जेकॾहिं उनजो बि था पेर खणूं सर ओके सर त असां बंबोर ते भला अचूं सर, बंबोर ते ॻाल्हायूं त बंबोर वारे पासे जेकॾहिं ॾिसूं त बंबोर जेके असां बंबोर था चऊं, ख़ासि करे भिटाईअ 70 भेरा बंबोर जो ज़िक्र कयो आहे पंहिंजे जेको सो शाइरी बैतनि में। गुलशन तव्हां ई ॻाल्हायो, मुंहिंजे ख़्याल में सुठो। दोस्तो, असांजो सफ़र 8 साल पहिरीं शुरू कयो। ख़्यालु इहो आयो त असां इन वाट तां सफ़र कयूं ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे शाइरी जे पस मंज़र में असां भंबोर खां पंहिंजी जेका सफ़र जी शुरूआति कई। ऐं भंबोर जीअं साईं ॿुधायो त घणा दफ़ा भिटाई इन जो ज़िक्र कयो आहे। भंबोर जेको पुराणो नक्शो असां ॾिसूं त उन में 360 एकड़ जेका आहे भंबोर जा आहिनि। हाणे वञी मुश्किल सां 160 एकड़ बचिया आहिनि, सभु जा सभु कब्ज़ा थी विया आहिनि ऐं उहो रस्तो पुराणो जेको हाणे असांखे नज़र कोन पियो अचे। इन करे असां इहो नक्शो ॾिसो, इन नक्शे में तव्हां ॾिसो बंबोर जो किलो आहे उहो 360 एकड़, हाणे अची 60 एकड़ पतो आहे। उन खां पोइ असां जॾहिं निकिरूं था त पोइ पहिरीं ॻाल्हि इहा त इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदासीं हलूं त सस्ती जे हवाले सां। पहिरीं ॻाल्हि त सस्ती जे किसे खे असां हिते छेड़ियूं कोन पिया, जो ॾंद खता आहे हक़ीक़त छा आहे उनखे असां हिकिड़े पासे था रखूं। किताबु असांजो अची वियो, उन में असां तफ़सील सां सभु शयूं ॾिनियूं आहिनि। त भंबोर सस्ती जे हवाले सां आहे त सेवण खां उनखे दरिया में लोड़ियो वियो, पर असां चऊं था त बापड़ा जे पासे में सस्ती दरिया आहे ऐं तव्हां जेकॾहिं हिते वेंदव अयाज़ साहिब जो त हल्को आहे उते ऐं यूसी पलीजाणी आहे ऐं उते इहो दरिया आहे ऐं उते पंहिंजो पुराणा आसार आहिनि। इहो ॻोठ हो, हितां खां ससी खे दरिया में जेको लोड़ियो वियो ऐं पोइ भंबोर एतिरो परे कोन्हे। बापड़ा ऐं तव्हां जेकॾहिं ठठे जे पासे विया हूंदा त इहो 5-6 किलोमीटरनि जो फ़ासिलो आहे ऐं हेतिरे वॾे फ़ासिले खां ससी जेकॾहिं निकिरे दरिया हेॾी मस्तु दरिया में ऐं हेॾियूं सॼियूं ॻोठ रस्ता, ज़ाहिर किथे न किथे का डिस्टर्बेंस ज़रूरु थी आहे। उहे डिटेल असां पंहिंजी किताब में लिखिया आहिनि। असां ससी जे वाट सां निकिरूं था, जंहिंखे जेकॾहिं पुराणा नक्शा ॾिसो त उन में केच मकरान वारो रस्तो लिखियल या उठनि वारो वाट लिखियल आहे। इहो बिल्कुलु जेको गारो क्रीक सां गॾोगॾु जेको इहो रस्तो हले थो। ऐं पहिरीं जेका निशानी आहे उते दाबेजी में उहा ससी जी रोई ऐं जेका अॼु बि ससी जी रोई जे नाले सां मशहूरु आहे। उन जे पासे में ढोरो आहे
बरसाती नालो उहो जेका आहे उहो ससी जे ढोरे जे नाले सां मशहूरु आहे। उते जेके बि ॻोठाणा आहिनि उहो चवनि था सदियुनि खां वठी असीं हिते रहूं था, असीं पंहिंजे वॾड़नि खां ॿुधंदा अचूं त इहा रोई ससी जी आहे ऐं ससी जूं साहेड़ियूं जेके बंबोर खां निकितियूं उहे हितां ससी जे चवण ते वापसि थियूं। वापसि वञण खां पुठियां उन्हनि निशानी तौरु उन्हनि जेके इहे शयूं हिते इहा पथर लॻाई त असां हितां वापसि थियासीं। ऐं इन ते जेके निशान आहिनि उन्हनि जे बारे में साईं अव्हांखे ॿुधाईंदो। हिन पथर ते ख़ासि करे जेके तव्हांखे निशान ॾिसण में अचनि था इहे ॿ मुंडियूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी खीरोल आहे, ॿी वेड़ जंहिंखे चवनि था। बिल्कुलु हाणे त पथर असां जॾहिं फोटू कढिया हुआ त ॿिन्ही पासे खां इहे निशान अथव। मथां बिल्कुलु पथर जे चोटीअ ते हिकिड़ो खुड़ीअ जो निशान आहे हिन पथर ते। ऐं उतां जे माण्हुनि जो इहो चवणु त ससीअ जूं जेके सहेलियूं हुयूं इहे इतां खां मोटियूं, जीअं भिटाई जो बैत त वञो सभु वरी आई जे वरनि वारियूं। ऐं 4, 5, 7, 8 जेका बैतनि अरे खीरोल ऐं वरोड़ हिन पथर सां बि हिकिड़ी कहाणी मनसूब अथव। हाणे एतिरो ते वक़्तु कोन्हे जो तव्हांखे असां ॿुधाईंदा हलूं। जेके बि ससीअ जा माॻ आहिनि हर माॻ सां का न का कहाणी, का न का ॾंद कथा ई भली हुनखे तव्हां चओ त उहा आहे। ईंदो त वटी जी बाग जेको ससी जी बाग जे नाले सां मशहूरु आहे, ठठे ऐं मलीर जे बॉर्डर ते। हाणे उहो तबाह थी चुको आहे, ख़तमु थी चुको आहे। पुराणनि फिल्मनि में तव्हां ॾिसो जागोटा इंसान या ॿियूं फिल्मूं उनजी शूटिंग हिन बाग में थी। हिते मंदरु हुयो, मस्जिद हुयो, खूह हुया, वॾा वण हुया, सभु जा सभु ख़तमु थी विया आहिनि। ऐं इहो भंबोर खां 9 किलोमीटरनि ते आहे। ससी जे बाग जे नाले सां मशहूरु आहे, वटी जी बाग बि हिनखे चवनि था। इन खां हीअ ससी हेठि जेको आहे उहो वटी जी डोरो, जंहिंखे घगर डोरो बि चवनि, इहो इनखे पाणी हिन मां हासिलु थींदो इन झाके। इहे 2 निशानियूं पहिरीं ससी जे नाले सां अॼु बि मशहूरु आहिनि इन रूट तां। हीअ अॻिते पिपरी वारो इलाइक़ो उनखे पुराणे ज़माननि में वेड़ वारो जंग करे चवंदा हुआ, जंहिंते लतीफ़ पंहिंजी शाइरी में उनखे इस्तेमालु कयो आहे। ऐं असांजे आलमनि खे इहा ख़बर न हुई त हू वेड़ खे ईअं जंग करे छॾियऊं, पर उहा जाइ पंहिंजे हिते अॼु बि मौजूदु आहे। हीअ हाणे सॼो पोर्ट कासम में अची वियो। साईं इन बैत जे हवाले सां ख़ासि करे वेड़ वारो जेको हीअ जेका ढोरी आहे इन ते 7 भेरा शाह लतीफ़ जो ज़िक्र कयो आहे। हिते जेको बैत आहे आंके साथी ॾिठ जे मूं वेड़ विञाया, इहा जेका मुंडी आहे इहा ससीअ कढी हिते फिटी कई हुई, जंहिंजो भिटाई हिते ज़िक्र कयो आहे। आंके साथी ॾिठ जे मूं वेड़ विञाया, रुआं रत मंझुठ हाणे इन भेणीअ। इहे 7 जायुनि ते 7 दफ़ा इन वेड़ जो ज़िक्र आहे। किताब में नक्शो आहे ऐं नक्शे में हितां वीड़ खां घणा रस्ता निकिरनि था। असांजे घणनि दोस्तनि चयो त कराची मंगो पीर खां ससी वई, पर जॾहिं असां लतीफ़ खे पढ़ूं था त लतीफ़ मलीर खां रस्तो जेको अचे थो केच जो उनजो ज़िक्र करे थो, ऐं उते मलीर जी मींदी जो ज़िक्र करे थो। ऐं उते ससी जे हवाले सां ससी जी लकी आहे, मींदियारी डोरो आहे, जंहिंजे लाइ बि चवनि था ससी जेका मींदी जी टारी हथ में हुई उहो उते लॻाई। इहे सभु ॾंद कथाऊं आहिनि जेके ससी सां मनसूब आहिनि हिन किसे में। तंहिं करे असीं सम्झूं था त लिंक रोड जेको अचे थो, लिंक रोड वटां पुराणो रस्तो निकिरे थो, उतां ई ससी जेका आहे अॻिते हुई। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॿुधाईंदो हलां त असां जेका अंदाज़ो लॻायो, माण्हुनि खां पुछियो त वीड़ में ससी खे पहिरीं राति थी, जेका पहिरीं मंज़िल थी उहा वीड़ वारे जंग में थी। उते कंहिं ॻोठ में रही, उतां खां पुठियां उहा सुबुह जो निकिरे थी ऐं मलीर पहुचे थी। मलीर जे हवाले सां बि लतीफ़ जा बैत आहिनि। साईं खे वरी गुज़ारिश कंदी त पोइ बैत साईं। अजू का ईंदी छपर मूं संग थियो, लाहींदसि लिंगनि ते मलीरा मींदी, विंदराऊं वेंदी आरी जाम अजो करे। 3 भेरा शाह लतीफ़ पंहिंजे बेतनि में, 2 भेरा बेतनि में, हिकिड़ो दफ़ो वाईअ में मलीर जो ज़िक्र कयो। मलीर जी मींदी मशहूरु आहे। हिन वक़्तु बि तव्हां खुदरू बुनियादनि ते तव्हां मलीर में वेंदव, मलीर जी मींदी उते आहे। जंगनि में ढोरनि में मलीर जी मींदी मिलंदी, इन करे लतीफ़ उन मींदी जो ज़िक्र कयो। हिन मलीर जे नए खां पुठियां 2 रस्ता निकिरनि था। हिकिड़ो रस्तो बाज़ार पुराणो जेको जिते काफ़िले सरा हुयो उतां खां रस्तो निकिरे थो। ॿियो रस्तो जेको आहे हाणे जेको बैरिया टाउन आहे हितां खां निकिरी अॻिते निकिरी वेंदो, सेवाणी वाट जंहिंखे चऊं था उन सां मिलंदो। ससी बजाए पंहिंजे बाज़ार जे तरफ़ वञण जाए हुन पावारो जेको हाणे जिते बैरिया टाउन जो ग्रांट मास्क आहे उन ई पासे निकिरी वई। ऐं उन जे हवाले सां भिटाई जो ज़िक्र आहे, उन में पावारो जो ज़िक्र आहे ऐं पावारे सां गॾु लले जो पेड़ आहे।
ललो पिंड मशहूरु आहे जिते हाणे गोल्फ सिटी जेको आहे ठहियल आहे। ही पांवार जो जबल आहे जंहिंजे हवाले सां जेको आहे भिटाई जी शाइरी मौजूदु आहे। पांवार जो जबल आहे जेका देह लंगेजी में हुते हाणे हुते ग्रांट मास्क आहे। हिते जोगी ईंदा हुआ रहंदा हुआ। भिटाई जो तकियो हाणे सभु शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। हिन हवाले सां जेका शाइरी आहे साईं खे ऐं वरी ॿुधाईंदुसि। इहो सर भिटाई जो तकियो हो जिते इहो मास्क ग्रैंड जामे मस्जिद जेका जो बोर्ड लॻो पियो आहे, हिते जोगी अची राति रहंदा हुआ। जेके वेंदा हुआ नानी हिंगलाज ते राति जो हुते असांजो हिकिड़ो पालारी हो, ॿियो गबोलो, हिननि खे तुल कराईंदा हुआ ऐं राति जोगी हिते रही सुबुह मां सवेर हलिया वेंदा हुआ। भिटाई जो ज़िक्र कयो त वञण मूं वाजिबु थियो। सुबुह सवारो पिड़ में पेर, इहो ललो पिड़ में पेर पुनुअ जो लॻो लावारो, पब विझंदसि पुठ ते पछंडे पावारो, इहो पावारो जबल आहे। धोबिण जो धाड़ो जेकस जत हणी विया। हाणे न के हुते जोगी आहिनि, न को इहो ललो पिड़ आहे, न को भिटाई जो तकियो आहे। ऐं ॻाल्हाईंदुसि साईं वरी कावड़जी पए मथां। इहे त बिल्डोज़ थी। दोस्तो ॻाल्हि इहा आहे त हाणे जेकॾहिं असां भिटाई जी शाइरी खे ॾिसूं त वीड़ खां पोइ ॿी जेका राति थी ससुई खे उहा हिते हिन पांवारे कंहिं ॻोठ में थी हूंदी। छाकाणि त शाइरी मां अंदाज़ो लॻाईंदो सुबुह सवारो माना सुबुह जो निकिरे थी ऐं हिते हुनखे राति थी। ॿी राति जेका ससी खे उहा हिते थी ऐं राति जो सफ़र करणु हिन वक़्तु बि ॾुखियो आहे। इन करे घणा इहे चवनि था त ससी सॼी राति ॾींहुं सफ़र में रही इहो अक़ल असांजो तस्लीम न कंदो। राति जो निंड बि खपे, शयूं आहिनि, रस्ता आहिनि, ॾुखिया रस्ता आहिनि। तंहिंजे करे ससी बि इंसान हुई, उहा राति रही हूंदी। तंहिंजे करे ॿी जेका राति ससी हिते गुज़ारी उन खां पुठियां ही लले वारो पेड़ जेको पुराणो हाणे हुते गोल्फ सिटी आहे ऐं उनजो ज़िक्र बि आहे जेको पहिरीं साईं जेका शाइरी पढ़ी उन में आहे। उन खां पोइ जेका आहे हितां खां देह कोंकर में ही असांखे हिकिड़ो जबल मिले थो जेको अञा ताईं मौजूदु आहे। त गबोलनि जा ॻोठ आहिनि ऐं हीअ आहे गरियो, हिनखे गरियो बूटी चवनि। गरो कोस्तार में असां चऊं कंगण खे, कंगण जेको आहे उहो हुनखे चवनि था हुते जा ॻोठाणा त ससी हिते आई। इहा कंगण जेका ससी जी घरो जेको उहो गुम थी वियो, उनखे ॻोल्हींदे हुनखे देरि थी वई। इन बुठी जो नालो उन ॾींहं खां पुठियां जेको आहे उहो गरियो बुठे आहे ऐं इन करे भिटाई बि उन जो ज़िक्र कयो आहे इन बुठी जो। इहो अञा ताईं मौजूदु आहे। अलाह करे सलामत रहे साईं खे। टिनि बैतनि में इन गरे जो ज़िक्र आहे। कंहिं पर रवां पिरीअ खे, कंहिं पर रवां पिरीअ खे पचण नाहे पचार, अंदर थी आऊं करे खाणी मंझि खुमार, गरे में गुफ़्तार हाणे स्वयं होतन जी। इहो गरियो आहे जेको असांजे आलमनि खे सम्झ में कोन आयो, पर इहो जबल आहे। गरे खां थोरो अॻिते असांजे 2 किलोमीटर ते थधो नदी आहे, उते पुराणो रस्तो निकिरे थो, उते ही चोटी आहे। हिते रस्तो हूंदो पुराणो, अञा बि हाणे ख़तमु थी चुको आहे ऐं उतां खां इहो रस्तो निकिरे थो चंबेल चोटी। ऐं जंहिंखे बि असांजे आलमनि जेको आहे ईअं लिखी छॾियो का चोटी उहा मौजूदु आहे पंहिंजे जाइ ते। हुते नक्शे में तव्हां ॾिसो सरज़मीन ते वञो, इहा चोटी मौजूदु आहे। इन में जेका शाइरी आहे, शाइरी जे लाइ वरी बि साईं खे तकलीफ़ ॾींदुसि। 2 बैतनि चंबेली जा, हिकिड़ो त वाक़ई सहेली जे हवाले सां थी सघे थो, पर हिते सिधो पिधो जेको बैत आहे हिते त ख़ैर उहो ग़लति लिखियलु आहे। डूंगर तां बेली न त ॾिजे बन बेलिन रे, सा कीअं वे वेसरी सूरन सबेली, सहेली कोन्हे चोटी चंबेली जीअं तीअं झागे उखती। 2 चंबेली जे 2 जायुनि ते ज़िक्र आहे इन जो। हिते बाक़ाइदे हथनि जा मथे निशान बि हिकिड़ा आहिनि ससीअ जे नाले सां, त माण्हू चवनि पोइ ख़बर न कंहिंजा आहिनि। उन खां पोइ असां अचूं था नाराथर ते। नाराथर ससी वञो मोखीअ मतारनि जे हवाले सां मशहूरु आहे। साईं बदर रबड़ो साहिबु वेठो आहे हिते। मोखीअ जो महखानो बि आहे ऐं हीउ हिकिड़ो सेंटर पॉइंट हुयो केच खां, कराची खां, सेवाणी वाट, एॾां देबल बंदर, बंबोर वञण लाइ हीउ चौवाटो हूंदो हो। ऐं हिते हिन सॼे जबल जे ओसे पासे अव्हांखे बेशुमार क़ब्रस्तान मिलंदा, चौकुंडी टाइप जूं क़बरूं मिलंदियूं। उते मोखी जो आस्थानो आहे ऐं हितां पंहिंजो ससी जेका गुज़री अॻिते वेई। ऐं इन जो बि ज़िक्र जेको आहे इहो असल में नारा सर, हिते पाणी हूंदो हो जीअं असां वटि जंगी सर ॿिया इलाइक़ा आहिनि। इहो नारा सर, हाणे हुनखे असां नारा थर था चऊं। इहो नारा सर वारो इलाइक़ो, हितां खां अॻिते असां निकिरूं था। हीअ लट, अखियूं लट ओराटियूं, त हीअ लट दे लट आहे, लट जी नए बि आहे। ऐं जेको सादी टाउन खे ॿोड़े उहा नए जेका आहे लट जी नए आहे। ऐं असांजे आलमनि खे बि इन जे बारे में का ख़बर न हुई। उन ईअं ॻाल्हि कई त लट मिटी जेका आहे उनजो ज़िक्र थियो, पर उते उहो इलाइक़ो मौजूदु आहे। भिटाई जे शाइरी में उहो ज़िक्र मौजूदु आहे। साईं खे वरी बि चवंदो त शाइर पढ़ी
लट जो ज़िक्र बि शाह लतीफ़ अंदाज़न 7 बैतनि में कयो आहे। हिकिड़ो बैत इहो तव्हांजे अॻियां लिखियो पियो, अखियूं लट ओराटियूं कंहिं पर कड़ियां पेर, लठ लट कोन्हे लठ लाहींदो केरु मूं जे इहे माज़ूर खे। इहो जेको सो मूंखे रस्तो केरु ॾेखारींदो। हुन खां पोइ हब सिंध जे बॉर्डर ख़तम थी थो वञे, बलूचिस्तान हुन खां पुठियां शुरू थो थिए। बन मुराद खान ऐं हब में 3 वॾा क्रॉसिंग हुया, बन मुराद खान, लंगलोवार ऐं मयू। ससी जेका आहे उहा मयू वारे क्रॉसिंग खां क्रॉस थी करे, अवां जेकॾहिं सिकंदर आज़म जो नक्शो गूगल ते ॾिसंदा आहियूं त उहो बि उन ई जाइ ताईं क्रॉसिंग आहे जेका जितां ससी क्रॉस कई आहे, जेका डासोल ऐं मयू वारो क्रॉसिंग चवनि था, उन ई क्रॉसिंग तां अॻिते वेही ऐं पोइ बलूचिस्तान जो इलाइक़ो शुरू थो थिए। ऐं हब जो ज़िक्र शाइरी में आहे, जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो था। साईं जेकॾहिं पढ़े 7 बैतनि में भिटाई हब जो ज़िक्र कयो आहे। हिकिड़ो इहो बैत लिखियो पियो, हथें पेरें मूनणे सिरज साह पसाह होत गॾबई हब में रहबर मथे राह जा जा साणुई साह तां पारज कोम पुनूअसी। 7 दफ़ा जो ज़िक्र आहे। हिते हिकिड़े जाइ ते न हब जे किनारे ते थाल आहे जो पिंड पैंट थियल आहे, अटो ॻोयो रखियल आहे। हुनमें उहा तस्वीर असां न ॾेई सघियासीं, ग़लती थी असांखां। त उते जा माण्हू चवनि था त ससी हिते राति जो रही ऐं पाण हुन चयो असांखे मूंखे अटो ॾियो, थाल ॾियो, ऐं ॻोयां थी। जॾहिं उहो ॻोहण वेही उनजे नदी जे किनारे ते जिते अञा ई पाणी वहे थो, साफ़ पाणी, ऐं जीअं पोइ उठनि जी टिलियुनि जो आवाज़ु ॿुधई ससी उथी हली हुई, थाल उते रहिजी वई जेको पिंड पैंट थियल आहे। अञा तीअं माण्हुनि जे दिलि में इहा ॻाल्हि आहे, हुजे या न हुजे, पर ससी जे नाले सां इहे शयूं मनसूब आहिनि। तंहिंजे करे सम्झूं था त रस्तो इहो ई आहे। हुन खां पोइ असां अचूं त बलूचिस्तान पब रेंज में, जेको सभिनी खां ॾुखियो रेंज आहे, जिते ससी निकिरे थी, ऐं जंहिंजे बारे में साईं पब जे हवाले सां पब जो 24 बैतनि में ज़िक्र आहे। तपी कंदे को डूंगर ॾुखोयनि खे, तोजे पहण पब जा त लिंग मोहजाब लो, कंहिंजो कोन्हे ॾो अमर मूंसी ईअं कयो। 24 भेरा ज़िक्र आहे इन पब में। हिकिड़े जाइ ते पत्थर ते निशान आहिनि, इहे जेके सवास वारा निशान आहिनि, उठनि जे पेरनि जा निशान आहिनि। कहिड़ा निशान आहिनि इन ते असां लिखियो आहे त इन ते रिसर्च थियणु खपे, पर उते इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे त इहे पुनू जे भाउरनि उन्हनि जा निशान आहिनि, उन उठनि जा निशान आहिनि। इहा ॻाल्हि उते अञा ताईं हिन पब में मशहूरु आहे। तंहिंजे करे असां इन ई हवाले सां इहा ॻाल्हि इहे तस्वीरूं रखियूं ऐं तफ़सील सां असां पंहिंजे किताब में इन ते लिखियो आहे। उन खां पुठियां खूंवरी आहे जेका ससी जे नाले सां मशहूरु आहे, ससी जो टोबो, ससी जी खूंवरी, जेको अञा ई मौजूदु आहे उते। उते माण्हू चवनि था त हिते जेका आहे उहा ॻाल्हियूं त इलाही वधा करे लिखियो हुयो, पर इन खूंवरी ते थी सघे थो ससी वेठी हुजे, पाणी पीआई। उन खां पुठियां अञा ताईं इहा खूंवरी ससी जे नाले सां अॼु बि मशहूरु आहे। उन खां पुठियां दरगाह संगर पट जो ज़िक्र साईं कंदो। संगर पट जो अंदाज़न बेटा इहे 6 बैतनि में ज़िक्र कयो आहे। ख़ासि करे जेको हिते बैत लिखियल आहे, उअं तां ओठिन न कयो जीअं तां उत न आरी जाम। आरी जाम कोन जो पुनो खे वञी ज़ोरी खणी अचो, जो बेटा एॾी वॾी शायदी वेठो ॾे। उअं तां ओठिन न कयो जीअं तां उत न आरी जाम, बड़की ॿाहिरि निकिती गाज़र मंझां गाम, सिसी ॾेई साम सुती संगर पटीअ। इहा माई ससी आहे ऐं पुनूअ जी हिकिड़ी हिते क़बर आहे, अंदरि जेका हिन जे अंदरि क़बर ठहियल आहे, या हिकिड़ी ॿिन्ही जी ख़बर आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त घणा असांजा लिखनि था त संगर पट खां अॻियां ससी न हुई। जेकॾहिं असां भिटाई खे पढ़ूं था त ससी अॻिते फोर नदी ताईं वई आहे, वणकार ताईं वई आहे, विंदर ताईं वई आहे। तंहिंजे करे असां अॻिते उहो सफ़र अव्हांखे ॾेखारींदासीं इन संगर पट खां अॻिते। हाणे हीउ जेको हिन पासे अव्हां ॾिसो पिया, ऐं हेठि हिते कंहिं दौर में कटोरो रखियलु हूंदो, जेको पत्थर खे वॼाईंदो वॼंदो हुयो, कटोरो केरु खणी वियो, हाणे ॿिए कंहिं पत्थर में आवाज़ु अची थो वञे। हू चवंदो उहा माई ससी जेका जेको दराड़ हुयो, उन खीर जो कटोरो हिते रखी करे उहा भॼी अॻिते हुई। जॾहिं उहो पुठियां लॻुसि त उहो कटोरो ते पिंड पैंट थी वियो। ऐं इहा जाइ बि ससी जे हवाले सां अॼु बि मशहूरु आहे। उते कंजी आवाज़ वांगुरु वॼे थो, अवां जेकॾहिं हिनखे वॼाईंदऊं, इहो हिकिड़ो पत्थर खणी वेंदा आहियूं, आवाज़ कंहिं ॿिए पत्थर में अची थो वञे। इहो ॾिसणो पवंदो, हेठि जेके अर्ज़ियात जा माहिर आहिनि उहे ॾिसनि, पर उते इहो मशहूरु आहे त ससी हितां इहो जेको दराड़ ससी खे हिते ई मिलियो। ऐं इन ई करे इन में जेके आवाज़ आहिनि उहो ससी जे रोअण जो आवाज़ु आहे। माण्हुनि वटि इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे। उन खां पोइ आहे इहो मोहबार
जेके जबल आहे उहो साम्हूं जेका गाॾी बीठल आहे साईं मोहबार जेको जबल आहे ख़ासि करे इन जे लाइ वरी इहो जेको हिन में हेॾो सॼो फाट आहे मोहबार जो भिटाई ॿिनि जाइनि ते ज़िक्र कयो आहे पर इहो जेको फाट आहे उन जे लाइ माण्हुनि जो इहो चवणु आहे त ससीअ जे दाहन ते इहो इन मां इहो रस्तो निकितो आहे जंहिंमां इहा न वञे थी। हिकिड़ो भिटाई जो बैत बि आहे, पसी उञ उसाट डूंगर में ॾार पियो, पसी उञ उसाट डूंगर में ॾार पियो, ससीअ जे सूरनि जी लक लक मथे लाट, ससीअ जे सूरनि जी लक लक मथे लाट, छपर मिड़ियो ई छाट मुंद पार कढी पाणी कयो। उन खां पोइ असां अचूं था विंदर, या विंदर जी न विंदर जो ज़िक्र घणो कयो भिटाई पंहिंजे शाइरी में। हितां खां रस्तो हिकिड़ो सोनमियाणी वञे थो, ॿियो रस्तो बालाकोट खां पंहिंजो कांयारो कोट वञे थो। ससी बजाए सोनमियाणी वारे रस्ते खां विंदर खां बालाकोट वारो रस्तो हुन वरितो। साईं विंदर जा भिटाई जे रिसाले में 20 बैत आहिनि विंदर जा। हिकिड़ो इहो बि थिए इहे जो पुराणो हिते ससी रात रही, इहो हड़पा दौर जो आहे ऐं बालाकोट पुराणो जेको आर्कियोलॉजिकल साइट्स आहे इन ते तहक़ीक़ थिए पई। ही बर जो इलाइक़ो, बर जो ज़िक्र बि शाह लतीफ़ भिटाई बर जो ज़िक्र बि शाह लतीफ़ 17 भेरा कयो आहे। वर में कोन्हे वर मूंसां ॾेरनि वर वॾो कयो, नियारींदसि निकिरी बोतन कारण बर, आॾो टकर टर मतां रोह रतियूं थिए। बर जी माना असांजे आलमनी बर लिखी छॾियो, बयाबान जंगल, पर ही पोठो आहे जेको वॾो। हाड़े जो ज़िक्र आहे, हाड़े जे किनारे जेको कोस्टल हाईवे आहे पुराणो रस्तो हाड़े जे किनारे तां अॻिते वेंदो। हाड़े जो ज़िक्र 32 भेरा कयल आहे शाह जे बेतन में। ख़ासि करे हिते हिकिड़ो बैत आहे उहो तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां। पेर पटाई कुंवरा डूंगर मथे ॾे, पाण न पसे फटियो, करे केचन खे, हाड़ो हो त परे, को ॼाणा कीअं लंघिया। ससी राति जो हिते रही, ससी जे खट जे नाले सां ही मशहूरु हाड़े में आहे ऐं अॼु बि हुनखे चवनि था माण्हू हिन ते जेकॾहिं चढ़ी था। हाणे ज़लज़ले जे करे हटी वियो, पहिरीं इहो खट हुयो जंहिं ते लतीफ़ बि हिन जो ज़िक्र, हिन जो ज़िक्र न कयो पर शाइरी में जेका उहा आहे ज़िक्र हिन जो। हीअ कुंवरी हिन जे लाइ बि चवनि था त पासे में सभु पाणी खारा पाणी, हीअ मिठो पाणी ॻोठाणा चवनि था ससी जे दुआ सां जेका हिन जो पाणी मिठो थी वियो, इन करे इहा बि ससी जे कुंवरी जे नाले सां मशहूरु आहे। हीअ फोर नदी आहे ऐं हितां ससी वापसि थी। छो वापसि थी? इन करे हुनखे ॿुधायो त हीअ रस्तो जेको तव्हां वठो पिया केच वारो, इहो ग्वादर खां फिरी वेंदो, इहो वॾो रस्तो आहे ऐं हितां समुंड जे करे रस्तो मूंखे न मिली सघंदो, तव्हां वापसि थियो। हितां ससी वापसि थी। घणनि आलमनि लिखियो आहे त ससी हितां वापसि थी। बदर साहब वेठो उन पंहिंजे किताब में लिखियो त फोर खां ससी जेका आहे उहा वापसि थी। उन खां पुठियां कैगण पट, इन विच में जेको आहे कांयारे कोट खां जो रस्तो अचे थो, हीअ बि जेको आहे हाड़े जे इलाइक़े में ही पट, जंहिंजे बारे में साईं कंहिं चवंदुसि। हिन कैगण जा 14 जेके से बैत अथव, करड़ा डूंगर कैगणी वारा। हिकिड़ो मैडम बैत लिखी मोकिलियो जेको 10-12 सिटनि जो, करड़ा ते हली बैत पढ़ी छा। वणकार, वणकार जो ज़िक्र हिते 21 दफ़ा रिसाले में अथव, जंहिंखे असांजे आलमनी वणकार लिखी छॾियो। हिते वॾो हिकिड़ो वॾी एराज़ी, वॾी एरिया जो नालो आहे। मां विहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी, जेकी ॾिनई ॾेज में सो सबो ई सार, वञा थी वणकार ॾिठमि पेर पुनो जो। हिते काफ़िले सरे जा निशान आहिनि, हिते पुराणो कब्रस्तान आहिनि, पुराणो रस्तो आहे। हितां खां ससी वापसि थी। हिन लूणो डोरो असांजे रिसाले में लम्हूं लिखियल आहे। हितां खां हुतां जा माण्हू चवनि था हितां वापसि थी ससी, छाकाणि त हुनखे ख़बर पई त पुन्नू हाणे हुतां निकिरी चुको, हिते मूंखे न मिलंदो, केच में वापसि थियो। हितां खां ससी वापसि थी। लम्हूं साईं सुती संगर पटी, पर इहो लूणो डोरे लस सुती संगर पटी, इहो जबल बाए ढोरो बाए जितां मोटी वापसि। ही जाऊ वारो लक, ही शीरीन फराद आहे, जाऊ वारो लक जंहिंजो ज़िक्र भिटाई कयो आहे। जाऊ जर वॾा वण वणकार जा जिते जाऊ जमर जर, कोसा तपन ककरा बि दम दम तपे दर। केच में किलो अमीरी कला, पर पुन्नू जे कला जे नाले सां मशहूरु आहे। ही छाकाणि त आरी जाम खां पुठियां कंहिं बि बलोच हुकुमरान हिन खे इस्तेमालु न कयो,
छाकाणि त उन्हनि सम्झो इहो मनूस आहे, इन करे उते अॼु बि केच में ॻाल्हि मशहूरु आहे त कंहिं बि उन भुले थी आहिनि, कंहिं गिचकी आहिनि, कंहिं बि किले खे पुनू या आली खां पुठियां इस्तेमालु न कयो सवाइ अंग्रेज़नि जे, छाकाणि त उन्हनि सम्झो इहो मनूस आहे, सॼी उन हुकूमत ख़तमु थी वई, पुनू ख़तमु थी वियो, इन करे हिनखे मनूस सम्झी इस्तेमालु न कयूं। ही केच जो मकरान जो ज़िक्र आहे, घणो भिटाई न कयो आहे। ही आहे झूमर जल, हिन जे बारे में साईं 2 मिंट तव्हां सां ॻाल्हाईंदो, इहा आख़िरी असांजी स्लाइड आहे। वॾा वणकार जा जिते जाऊ जोमर जर, इहो रिसालनि में जाऊ झुमर जर, जोमर जर जबल जे मथां पाणी हिकिड़ो वही थो अचे, जो कंडे जे वण खे चवनि था मर माना घणाई में, जो माना घणाई, मर माना कंडे जो वण, बिराईवी ज़बान में जल माना पाणी, बाग आहे बाक़ाइदे जोमर जल। ही ससी पुनू जो मेड़ो लॻंदो आहे 12-13 शोभान ते, उहो ख़लीफ़े पंहिंजे तरफ़ां इहो तारीख़ मुक़ररु करे छॾियो। उहो ॾिसो जेके क़बर ते ॿिन्ही हिकिड़ो ई आहे, ससी पुनू हिकिड़ी क़बर में वई आहिनि। पालारी साहब कावड़ कान्हे, रुगो अर्ज़ हो त जेका ॻाल्हि आहे उन ते ई ॻाल्हाइजे। हूअं त सिंध सां कई बेदन थिया आहिनि, जे उहे वेही रहंदासीं त किथे कोन पहुचंदासीं। Our next speaker, who was the keynote speaker, and for whom I was very anxious to meet because we haven't met for a long time, is Fakir Sayyid Ejazuddin. He was born in 1942, educated at HSN College, Lahore, qualified as Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales in 1965. He has served in senior managerial positions, private and public sectors, in Pakistan and in Abu Dhabi. From 2004 until 2008, he was Director Studies, International Relations, National Management College, Lahore. From 2009 until March 2012, he was Principal HSN College, Lahore. He completed 4 major projects there. Emphasis was given to career counseling, internship, and university placements. He served as Minister for Culture, Tourism, and Environment, where he gave gravitas to the position. I think Fakir Ijaz is much above that. He has been chairman of the Lahore Arts Council and a member of the board of the Lahore Museum. Also a chairman of the executive committee of the Lahore Museum, as international counselor of the Asia Society and the country representative for Asia House, London. Since 1994, he has been the honorary British consul for the United Kingdom at Lahore, in recognition of which he was awarded the OBE in 1997. He is a regular feature writer for Dawn, Pakistan's leading national daily newspaper. He has published a number of books on art, history, politics, diplomacy, cartography, and Pak-China relations. His recent books are Sketches from a Howdah, Charlotte, Lady Canning's Tours, 1858 to 61, Shooting Words, Writings 2014 to 2018, Imperial Curiosity, Early Views of Pakistan, 1845 to 1906, Studies in Majesty, Paintings by August Schoffet, and Related Portraits 2021. And always a source of inspiration. Fakir Ijaz from Lahore. Thank you. Can you hear me? Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Thank you. Well, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me thank Mr. Abdul Hamid Akhund for his generous invitation to be your keynote speaker this afternoon. The occasion is, of course,
the launch of the Endowment Foundation Trust reprint of the book I Saw Myself, Journeys with Shah Abdul Latif by Shabnam Virmani and Vipul, Rikhi. I should have read the speech in Urdu or in Sindhi, but unfortunately, my familiarity with Sindhi is casual and far less than it should be. But I'm honored that since the book is in English, I'm going to take the liberty of speaking to you about the book in English. After reading this book, I felt emboldened to speak to you about it for two ostensible reasons. The first is that because one is ignorant about a subject does not mean that one should not be inquisitive about it. In fact, quite the reverse should be true. The second reason is that ignorance of a language is no excuse. Like the book's two authors, I do not speak Sindhi, nor can I read Shah Abdul Latif's Kalam in its original script. Nor can I differentiate between the various rags which provide the rhythmic structure for his poetry. But I hope I still have the sensibility to appreciate what the authors describe as the orality, the feeling behind the words of our unique inheritance. Some years ago, my wife Shanaz had translated into English the Tilisme Hoshraba. It was a compression of a much longer narrative of epic struggles, magical turns, and the pursuit of love. Being a dastan and belonging to the tradition of orality, it relied upon the human voice to convey imagery, to conjure imaginary characters, to hold the listener enthralled by a panorama that unfolded at the speed of speech. Shah Abdul Latif's poetry travels at the speed of sound, the sound of a human heartbeat, the sound of breathless love, the sound of a soul's silence. The two authors live on the Indian side of the border that divides a cultural tradition that once knew no boundaries, nor time, nor space. Poets and savants such as Shah Abdul Latif and his spiritual guides Rumi and Kabir did not belong to one specific area or to one measurable span of time. The message they tinctured their poetry was as much for their own time as for the future. They were of their time, they were for their time, and now they're for our time. The dates that we have for Shah Abdul Latif's life are 1689 to 1752, Christian era. When he was born in 1689, the Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir had been on the throne already for 41 years. By the time Shah Abdul Latif died in 1752, the Mughal throne had suffered 6 incompetent Mughal emperors and was occupied by Ahmad Shah Bahadur, the son of the infamous Muhammad Shah Rangila. It was a period of political and social turmoil, not unlike the period of instability that Mirza Ghalib was later to endure when the Mughal Empire disintegrated finally a century later. The authors mention that the latter period of Shah Abdul Latif's life was spent under the rule of the Balochi Kalhoras. They describe it as a period of comparative stability. But it's interesting how such periods of disorder and social upheaval should have been the crucible from which poured poetry of such enduring caliber. Little is known of Shah Abdul Latif's personal life. Born a Sayyid in a village called Hala Haveli in Sindh, his spiritual inheritance stemmed from the reputation of his saintly great-grandfather, Shah Abdul Karim Bulri. The authors tell us that Latif was, I'm quoting them, a man of languages, being proficient in Arabic, Persian, Saraiki, Urdu, besides his mother tongue, Sindhi. But they don't explain how and where he mastered this linguistic expertise. Shah Abdul Latif fell in love with a girl from Kotri, but he had to wait until his obdurate father's death before he could marry her. In between, he traveled across southern Sindh, visiting Hinglaj, and there he paid homage to the local deity, Mata Hinglaj. I'm not sure how many of you have visited the shrine of Mata Hinglaj. I was fortunate to do so, thanks to Abdul Hamid Akhund.
It is now more accessible from the highway to Gwadar. Don't expect to see a large Hindu shrine with large cupolas and deep inner sanctums. All there is for worshippers who make the trek through the hilly defiles are two large rocks, painted orange with rudimentary human features. Why then should thousands of devotees flock to it? Well, the answer lies in its sanctity. There's nothing in religious shrines or the graves of saints other than the spirit which imbues the earth which contains them. It is the spirit of it is the purity of their spirit that draws those who seek spiritual comfort and support from him. If Shah Abdul Latif prayed to Mata Hinglaj for the marriage to his beloved, his prayers were soon answered, but he should have prayed for a longer married life. For all too soon, his young wife died, childless. From then on, poetry became Shah Abdul Latif's emotional companion. The ineffable quality of Shah Abdul Latif's compositions has been summarized by the two authors in these paragraphs. Shah Latif had his finger on the pulse of the audience, and he clearly assumes that and builds upon their familiarity with historical events and folk tales of the region. But unlike Rumi, who recounts entire stories in his poems, Shah Abdul Latif almost never narrates full tales. He only signals and references, culling out iconic moments or images or moods from these stories. He then builds them into powerful motifs, imbued with allegorical meanings. Shah Abdul Latif's artistry is almost literal. The authors continue, many of his poems are akin to strokes of a paintbrush, which build one upon the other, coming together to create a vast field of experience, an emotionally pulsating canvas of a particular ras, or a particular rag, a particular story, a particular quest. For listeners, just one brushstroke or breath can signal and summon the mood of the entire painting, just as a particular movement, pucker, between a few musical notes can invoke the spirit of an entire rag. Shah Abdul Latif's Risalo is a collection not so much of poetry meant for reading as much as it is a collection of musical verses meant for singing. And the 30 surahs in which the Risalo is divided are chapters clustering around poetry, around a specific theme, but more literally, they are musical modes based on specific Indian rags intended for a musical experience. Shah Abdul Latif is clearly among those who recognize the power of sound in spiritual practice. The authors quote the Mughal prince Dara Shikoh, the talented, open-minded, but unfortunate son of Shah Jahan. He translated the Hindu sacred texts known as the Upanishads into Persian, and one paragraph from his translation is especially haunting. The practice of hearing the voice of silence is the path of the faqirs, the Sultan al-Askar, or the king of all practices. The sound existed even before the creation of the worlds and exists even now and will continue to exist even when the worlds continue into non-existence. And this sound is called the infinite and absolute sound. And there is no practice higher than of hearing this sound. Shah Abdul Latif's Risala is divided into dastans consisting of beds, and each singer picks up the thread of the previous singer's bed and sings another evoking the same theme, creating a complex musical and poetic ambience. Shakespeare's Count Orsino, in his play Twelfth Night, had said famously, "If music be the food of love, play on." And like the Count, Shah Abdul Latif, I suspect, was more in love with the idea of being in love than with love itself. Similarly, Shah Latif's love is not for a particular woman, but for the concept of femininity, for the female ideal. His Risalo contains not one, but a number of heroines: Sohini, Sasi, Marvi, Mumal, Leela, and Nuri. And their efforts to achieve a permanent relationship with their male counterparts is an allegory at one level, and their encounters drama at another. Sohini's predicament, for example, is to cross the river to meet her beloved, even at the risk of drowning.
We know that the heroines represent mankind, and the masculine beloved is a symbol for God. But at the highest level of spiritual ecstasy, Shah Abdul Latif tells us, it is not to be united with one's lover, but to lose oneself, not to reach the other bank, but to merge in the swirling waters of the river itself. One must seek a total annihilation of one's being. And so he laments, I'm in love with the one who carries daggers. I press ahead in the field of love. My head's on the chopping block. Now slaughter me, beloved. And over 200 years later, we have another poet, the Punjabi Munir Niazi, who expresses the same sentiments. Kuch sher de log vi zalim san, kuch sanu vi maran da shauk vi si. The townsman may have been cruel, but I courted death myself. Shah Abdul Latif's affinity with natural beauty surrounding him pervades every poem of his. And I found the lines from this hauntingly beautiful poem. It describes the lyrical union of Noori and her lover Tamachi on Kinjar Lake. Water below, flowing branches above, lotuses on the lake, fragrance in the air, spring has finally come to Kinjar. I row the boat, he casts the net. Yesterday, the whole day was spent in the chase. And in the story of Princess Shireen, who implores her parents to entomb her with her soulmate, a disheveled fakir, Shireen recites, your dear one's feet stamp the earth above your head. In all moments, we carry a spade and a string to dig and measure out our graves. Many of you might have been introduced already to the poetry of Shah Abdul Latif through H.2 Soli's book, Shah Abdul Latif a Bit, his poetry, Life and Times. It was published in 1940 in Mumbai and reprinted by Oxford University Press here in 1966. That cultural magazine volume I saw myself, which was printed in India and reprinted by EFT here. I was surprised to notice that Soli's work does not find any mention in the bibliography of Shabnam and Vipul's book. Soli's, as he described it, Labor of Love has 5 chapters on the historical and social topography of Sindh before it concludes with a 6th chapter on Shah Abdul Latif himself. It's still a significant assessment of the poet and his legacy. Soli did not attempt a translation of the whole Risala, but an abridgment known as the Muntakhab, collected by Qazi Ahmed Shah, containing the most well-known and popular of Shah Abdul Latif's verses. He emphasized the union of music and religion. Support his thesis with the savant Abdul Hamid al-Ghazali. Ghazali writes, listening to music and singing is an arouser of his longing and a strengthener of passion and love, an inflamer of the tinderbox of the heart. It brings forth from it states consisting of revelations and caressing descriptions, of which cannot be comprehended only by those who have tasted them. To Soli, Shah Abdul Latif is a poet, not a philosopher. The genius, he wrote, of Shah Abdul Latif being purely lyrical and lyrical inspiration being difficult to maintain for long at high levels, we shall find the poet's best work not in a single complete poem, but in short passages where a pure lyrical idea is expressed in simple, telling language of great power. This latest assessment by Shabnam Virmani and Vipul Rikhi echoes Soli's admiration for Shah Abdul Latif, whom he describes as the first great exponent of the imaginative use of the Sindhi language. We shall be treated later to renditions of Shah Abdul Latif's compositions, so why stammer I when there are better people here to sing? Let me end, though, with these verses of Shah Abdul Latif, translated by Shabnam and Vipul. It shines through their wonderful work of research. I found them particularly moving. I'm as patient as the earth. Even if you lay beyond sunrise and sunset, I would still walk to you,
on the feet of my eyes. My compliments to the EFT and to my friend Abdul for reprinting this book. It's a service not just to literature but to humanity, for its medicine is not intended to heal our bodies but to serve as a panacea for our fundamental undernourished souls, a sort of poetry sans frontières. Many thanks indeed. Thank you. We now move to the book launch. May I request our three trustees, Shamsulak Memon Sahab, Qazi Sahab, and the Secretary Culture to join us here. And may I also request, we have to our good luck and honor, Sayyid Khabar Hussain Shah Latifi, the younger brother of the Sajada Nashi, and I would like to request him to do the book launch. Please. Virmani. She has written a book which I came across very recently, and it talks of the laughing Bodhi. The laughing Bodhi keeps laughing all the time. And even when he's sleeping, he's smiling. But somehow or another, people spot him one day sitting under a tree, all quiet, with his eyes closed, no laugh, no smile. And after his journey within him is over, he is asked, Bodhi, why is it that you are here? You laugh and you make people laugh. So why are you quiet? He said, I have to charge myself so that I can make people laugh. We have forgotten our values, so we need to think and laugh. A novelist, a budding writer, and ardent exponent of Shah Latif. May I request Sahar Gul, Dr. Sahar Gul, to join us for her talk, and later on interview or to speak, have a dialogue with Shabnam Virmani. Ladies and gentlemen, Dr. Sahar Gul. कॾहिं दर कुशादा दिलबर संदा, कॾहिं दर कुशादा दिलबर संदा, कॾहिं पूरियो ॾींहुं, कॾहिं वञा वञी न सघां, कॾहिं पाण सॾीन, कॾहिं कुछनि की न की, कॾहिं बाज वंझा ॿोलीन, कॾहिं कौल करीन, कॾहिं हर्फ़ न कुछनि हिकिड़ो, कॾहिं ताकियूं ॾीन, कॾहिं खुलनि दर दोस्त जा, कॾहिं अचां अचण न लहां, कॾहिं कोठियो नीन,
कॾहिं सिकां सॾ खे कॾहिं गुझांदर गरहीन अहिड़ा ई आहिनि साहिब मुंहिंजा सुप्रीम. Thank you very much Endowment Fund Trust and especially Hamida Khun Sahab for kindly inviting me to speak on Shah Latif Bhittai, and also let her carry all of you through the journey Ms. Shabnam Virmani and Mr. Vipul Rikhi had through the desert of Kutch in Gujarat, where they met faqirs of Shah along with Kabir Panthis in their side of the border, and ultimately they got intrigued to translate Shah Latif Bhittai into English language. Today in my speech, I would talk how Bhittai's protagonists, his heroes and his heroines, walk from the preliminary stages to the supreme level of consciousness in their pursuit of ishq, and express exemplary levels of their understanding of love. And they take that understanding to the philosophical elevations. This is what I say, that Bhittai should be read like this. In his each surah, there is a beginning and there is a kind of journey, and after that there's a summit that his characters reach. Generally, there is a tendency in human beings to yearn for seeing ideas into material form. If you tell them an anecdote, or if you tell them a folklore from past with no proper dates, with no proper geographical links, they would go search and find those. And if they do not find time and a space, or dates and locations of that anecdote, then they would create those, but tracing those with solid evidence as well. Similarly, we Sindhis are very idealists. We also believe in seeing the uncommon and rare Bhittaian symbolism in the tangible form. Our fantasy is to see that idealism translated from word to spirit and action. For example, the well Marvi fetched water from, we would go and find that in Bhalva. Or we would like to spot the exact location of the bank where Suni entered the waters and swam through towards her mehar. Or say, for example, we heard Mr. Kalmati and Mr. Rahman, they treaded the path. Sassi went on in search of Pundu. They had tedious and toilsome walk on the similar terrain, both physical terrain and emotional or ideal terrain that clearly is hinted in Bhittai as we recite the baits as Mr. Rahman and Mr. Kalmati did. What I want to say that we humans can think only spatio-temporally, except some exceptional people who challenge this idea. But that is why I say that we humans cannot think without space and time. When we know the story, we should know the space and time, when it happened and which place it happened. If we don't know that story, we create. That's why, because categorically in our brain we are spatio-temporal beings. So we create a space and time, and we create those anecdotes, the space and time of those anecdotes which history doesn't tell us. So there must be truth and tangible accounts of folklore that Bhittai and his preceding poets like Qazi Kazan, Lutfullah Shah Qadri, Mio Shah Inayat sang in their poetry. Nor can I say with authenticity or challenge it either those were the real characters or those were not the real characters, or those are or not symbolic fiction of a poet's mind. Whatever it is so beautiful. The symbolism fascinates me so much also because this is the ingredient in his poetry that draws a clear sketch of Bhittaian attribute or Bhittaian personality trait, especially the one I would highlight in my today's talk, that how they ascend from preliminary stages of consciousness, and I passionately think what potentials are there to become Bhittaian and to perform the same feats of bravery. Is it possible or not? Such as loving passionately like Sasui can one do in this 21st century? Loving passionately like Sasui, or attributes of bravery in Ramkali and Kahodi, Samundri, even Ghatu. Unremitting pursuit of love in Suni, strange simplicity of Nuri, unbelievable surrender of Jam Tamachi and Raidyach as well, are the Jogis and Kahodis,
wading through the woods and rocks, and their quest and pursuit in the unknown locations where they did their ascetic practices. So in fact, those seem the tasks to be performed by the mythical characters. This is what I think as a Herculean or Promethean tasks which we see in Greek philosophy. Only half humans and half gods could do. So at present today, three moods of Bhittai's protagonists: the beginning, the journey, and the summit. The baits I would take from Sur Kalyan, Sur Sasui, and Sur Suni, and I wanted to talk on Kapayati as well, but I would cut short my speech. They carry very intense and concentrated meaning. Through those baits, I would elaborate what Bhittai expects from his protagonists, and which couldn't be expected otherwise from humans. To begin with, the bait I read about the journey within a material and immaterial void. He says, "Je tatto tan tanur jiya ta chande saan chamaye." Now this bait mentions of body, not soul. It mentions of a soul in the next lines, but what it says, "Je tatto tan tanur jiya ta chande saan chamaye." आणे आग अदब जी बारे जान जलाए, बुरका अंदर बाजियूं पंजूं सब पचाए, लुछण लौं लतीफ चए, पधर हड म पाए, मतां लोक लखाए, विसाला विच पे. Now think what he says. If like a furnace your body burns, cool it off by sprinkling water. Jitato tanura jiya ta chande saan chama. Chando in Sindhi is just one time sprinkle, and it carries too less quantity of water, and it carries less than a second or just 1 second of the time spent, and you sprinkle a chando, not more than that. Bhittai doesn't say to pour water and cool it off. Bhittai doesn't say to pour water, cool it off. He said chando. Chando, when you put chando, the thing is still burning. So jitato tanura jiya ta chande saan chamaye, aane aag adab ji bare jaan jalaye. Now with utmost reverence, Jaan in Farsi language is ruh. So above in the first line he has used word tan, then of course I have translated as Jaan. Aane aga adabasi bare jaan jalai. And what kind of reverence it is, that the more you enter into the reverence and veneration, you burn your soul. To burn your soul with the heat of that passion. And then he says, burka andar bazi upanju sab pachaye. Whatever the exercises, whatever the feats of bravery, whatever the practices that you are doing, practice those clandestinely. Practice those covertly, surreptitiously. Nobody should know those. You do that, you are passing through all that burning, but be quiet and be silent. This is Bhittai's character. And then he says, luchan lau latif chay, padhara hadum apai, mata lok lakhaye, visala vichupai. So the restiveness of the soul in love, Latif says, must not be revealed to anyone. So hide your love. When you are in love, hide it. Remember, is spread among people may impede your meeting the beloved. So, matan loka lakhaye visala vichpave. So, is Sadi Shirazi says, bisyar safar bayad ta pukhte shavad khami. You need a lot of journey until the raw becomes ripe. बिस्यार सफर बोयद तपुख्त शवद जामी सूफ बिस्यार सफर बोयद तपुख्त शवद खामी सूफी न शवद साफी न दर किशद जामी. So a lot of journey is required till raw becomes ripe, and the Sufi cannot be pure until he reaches mosque. The second mood is from Sasui. Again, I will mention the same way, that there is a beginning, there is a journey, and there's summit. Sasui initially is in the journey, and then she's talking about how hard is the journey, and she says, Utta veri, othar veri, veri thedam der. Chothu veri, vav thyo, je latya punuha per. Panju veri, sij thyo, je ulhi ki aver. Chahu veri, chapar thyo, je saman kaya ser. Sattu veri chandra thyo jo khidyo na vadi aver, vahire ji verat chulu karyan chapare. So now the camel drivers and the husband's brothers all were nemesis. In addition to them, she talks to the natural elements. She doesn't talk to only humans or talk about humans. She talks to natural elements, which she also terms as adversaries. And she says the wind which eroded the track Punu went on, the wind,
which eroded the track Punhu went on. It eliminated or it obliterated the footprints. Then there was the sun which set earlier than the normal time and delayed journey, causing the darkness of the twilight. The mountains led tractable and smooth passes, and the last of all was the moon which appeared late on the vistas of the horizon. So, and she says when before the twilight, when the birds too return to their own bubbles and nests, and she alone, when even birds have gone to their abodes, she's alone, hopping amidst the hills. And then she portrays further, now this further stages. Now she first tells that how hard is the journey. Second, she tells how dangerous is the journey. And I would recite a few bites from Saswi. Vada vanकार जा जित नांग सुजन नीला उते अब्दुल लतीफ चए कया हेकलिय हीला जित कुड़ब न कबीला उत रस ज रहबर राह में वाक़िफ़ न वणकार जी पाणी खयम न पाव जबल थो जलदायूं करे तिख ॾेखारे ताव लॻे लुक लतीफ़ चए माज़ूरनि मथांव उते ओॾो आव जित हो त हेकली आहियां. So now there are half-tree trees in Vankar. I'm also like as Kalmati and Rahman Saab said that Vankar is a place. I'm using the Vankar the same way as a place. That there are half-tree trees in Vankar while there are poisonous blue snakes in the territory she has to walk through. In such harsh circumstances, she is a solitary traveler, struggles to continue her journey. She says she knows no whereabouts of Punhu. She did not carry along a quarter seer of water in the journey. The mountain was overly unsympathetic. Winds blew hot and the sunbeams were scorching. And then she says, "Oh beloved, reach me in the tract where I am alone without any kith and kin and the tri-span of view in the terribly adverse circumstances." Now there's a shift suddenly. She's in the journey in search of Punhu and suddenly Bhittai, takes her to the zenith. I don't know at what stage. He asks her, "Vani cho vankar hitna goli hotake." Why are you going into the journey? Why don't you find the Punhu around, the beloved around? Vani cho vankar hitna goli hotake liko kine latif che baro cho be par thi sakti bad sandro prit Punhu asi par nae nen nihar tome dero dost jo. So look within. The beloved is inside. Bhittai asks her why she goes far to Vankar to find the beloved. Why does not she search for Punhu here? And here means around her. The beloved is not concealed anywhere. And asks her to be devoted. Being a devoted woman ashik or being a devoted ashik fulfill the claim of her love for Punhu. Close eyes, Bhittai asks her. I mean, in the entire Risalo, it is like this: either Saswi or Bhittai's characters are speaking, or Bhittai himself is speaking. In the beginning of the journey, the characters are speaking. Suni is speaking when she's going to Mehar. Saswi is speaking. But at one stage, Bhittai himself speaks. So he is suggesting Saswi, "Vanji cho vankar hitna goli ho takhe." And he says, close your eyes, look inside within yourself, and see the beloved that dwells there inside you. So these are the stages. Last stage would be of, I would mention of Suni. The similar way, Suni is in love, and she has a very complicated love, and she has to bear with this dilemma and stay into the dilemmatic situation for a long time. Initially she says, "Vahada vahan nawa anya vah age thyo." Vahada vahan nawa anya vah age thyo. Ghar vetheyu ghana karyo sartyu sang sama surat ja sahada ji saje rithiyan hundana palyo ma ghiro sab ghada khadi. So she says in the beginning she's kind of quite excited, ecstatic, and she's being taunted and teased by her friends, and she's telling her women friends that these are the new creeks or new flows of water, and the dangerous one is even far ahead. The violent current is still ahead. And she addresses to her women friends that while staying at home without taking any trouble, they just made tall claims of love.
Then she says, had they only seen the beloved as she saw him, they all would avoid to deter her from entering the waters. Rather, all of them would have picked the jars and hopped into the river. Now, this is one stage. Second stage is, she says, she's defining what is the real lover and the passionate, ardent lover, real lover, and then infatuated one. She says, Kandhiya ubhiyu ketriyu sahar sahar kan. Kandhiya ubhiyu ketriyu sahar sahar kan. Kinin sango sahajo ke ghoris kayo ghidan sahar sandu tin ghagaye ghidanji. So she says, many women standing on the bank of river exclaim, beloved. They call or they address their beloved. They yearn for their beloved. Some of them show reluctance to enter the water to avoid jeopardizing their life. Others dive deep into waters and say, sacrifice your life. The beloved is of those who enter water merrily and fearlessly. Now the third stage. Now she's into dilemma. She's with Mehar. And she's a bit dilemmatic. She says, Gora bai par hiu herat me pyo. I told about dilemma that she's with Punnu and then Damme at home is waiting for her. And she's in this too risky state of mind. Bai huna jala Gora hen, both are heavy. Gora bai par hiu herat me pyo. She's utterly surprised. Veha the veram the, niyame poe nihar. Vanya the vako the, pade poe pachar. Hute vaide varit sutudinam sartim. Now she's puzzled, as both sides of the picture of her life are overbearing for her, and she says while she's in rendezvous with Mehar, it causes delay in reaching her home because somebody is waiting at her home. If she ventures out to leave her home to meet Mehar, she becomes talk of the town. So she is in a situation, if she meets Mehar, she keeps her promise with him, but when she gets back to home, there's a trouble. So this is the kind of a stage. She is in love with Mehar and she's bold and she's, inviting her friends to see Mehar and his beauty and his charisma and try to enter the waters, and suddenly she, at the final stage, says this, which is the last bait I'm going to recite. She says, Vanya kinavari hunda rechai rahi raha. Vanya kinavari hunda rechai rahi raha. She says she would not like to return from Mehar. She would always like to be with him. Vanya kinavari hunda rechai rahi raha. Duhi pase dostaji magahi pawa mari. Surat na suhaka kayas chitachari. Visala frakaji suje galgari. Telhai tari muh ginyo motyo vanya. So she says she would not like to return from Mehar or go away from him. She would even wish to stay with him. Even he does not ask, even he does not invite and ask her to stay, still she would like to stay. She would rather like to die at the home and hearth of Mehar, where Mehar lives. So when he says her love is not the pursuit of Mehar's beauty. Now what is surprising thing, and initially she says ke Surat Sahar ji je dithava. She says, if you see his beauty, you will also jump into the water. But here she says, his beauty is not the matter. It's a matter of heart. So this is the higher stage. Surat nasuhaka kayas chitachari. So he says that it's not the pursuit of Mehar's beauty, it's a love that drives her heart crazy. Separation is certainly more valued than union. And she says on that account that without any regrets, on compunction, she swims back to her place. She went to Mehar, reached the bank, and then suddenly she comes up with this idea that Visala frakaji suje galgari telahi tari muhginyo motivanya. The vessel is attractive, but not as attractive as Firakh is attractive. So this is kind of zenith. In this first stage, she tells beauty of Sahar that made her enter waters. In the second stage, that the beauty makes Suni enter the waters to swim through him. So I want to say that when we go through Bhittai, we have to find it, because Bhittai, the original
It is said that was Ganj, but Ganj was also compiled by several people. So what was exactly order of the verses that Bhittai gave? I am trying to give order in my way because it's my perspective, my point of view. Many people will not agree. But I think that Bhittai too makes his characters start journey, go further, and take them to the philosophical stages, which are not physical, which are symbolic. So there are stages I firmly believe Bhittai should be read like that. As I say, the rudimentary stage, secondary stage, and rise to the zenith. Thank you. Thank you, sir. The answer to your question, if I may only quote Rumi, is I recited a verse. The lover laughed. He said, "Are you trying to hold me in your cute little rhyme?" I said, "You don't have to break it into pieces." He said, "It was too small. I couldn't fit in it." That's why it broke to pieces. So that's why it does not sound the way it does normally. I first picked up, welcome Shabnam, and thank you for joining us. Thank you. At the same I time, hope I I'm would audible. also like to welcome Ahmed Shah of the Arts Council, who has been very, very kind to me in allowing us to arrange this program this evening. I thought he would speak a few words, but he was late and we started the event. When I picked up her book at this Liberty shop, I came home, I read a piece, and I went back and I picked up all the books that were there so that we could distribute it to some of our friends. Unfortunately, in the meantime, things happened so that books are not allowed to come into Pakistan. And then I spoke to her and I requested her, if I have a permission, I would like to have this reprinted here. We have finally been able to do that. I will just read a piece from a book, a very brief one, which moved me. It says, it is said that once all the flies of the world got together and went to the king of moths. Moths are held in greater esteem than flies, and so the flies developed a desire to upward mobility. They buzzed about and presented their requisition to the king of moths that they should be given the status of moths and admitted to their club. After all, they cried, "We too have wings and fly around like moths do." The king of moths replied, "Sure, the job of a moth is to search for the light. Go and seek the light, and if you find it, I will declare you all moths." The flies buzzed off immediately, keen to bring back news of the light before the moths. They flitted across towns and villages and streets, finding a bonfire somewhere and a smoldering pyre elsewhere, or a row of lamps and candles in another place. They sped back to the king in double quick time and recounted their discoveries to him. "Now you must deliver your verdict," the flies demanded of the king. What verdict?" said the king. "That your moths come back. Then we will know whether we won or they did, whether we found more light or they did," the flies cried out. "Oh, that verdict has already been delivered." "My friends," exclaimed the king. "How so?" asked the flies, bewildered. "You fools, those who have found light, what need would they have to come back?" And then she translates Latif. She says, "If you want to be called a moth, come, extinguish the fire. This fire has roasted many. You must roast the fire. Seek the truth, extinguish the flame, but never spell out your inner secrets to others." Thank you,
Shabnam. And one of the questions my friend wanted me to ask you, I will leave it to Dr. Seher. Why did you translate Latif? Yes. Hi, Shabnam. How are you? Hello, hello Seherji. So nice to be with all of you, albeit digitally. Once again, yeah. मैं Please say. Yes. No, I just wanted to say thank you so much. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब्दुल हमीद अखून साहब ने इस किताब को लायक समझा पाकिस्तान में सिंध की भूमि में जहाँ शाह लतीफ़ के इतने मुरीद और आशिक हैं, सिंधी जानने बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच इस किताब को फिर से पब्लिश करना, I think it's a great honor for myself and Vipul Rikhi. This is a joint work. Unfortunately, Vipul has not been able to join us today, but I'm very indebted to Endowment Trust Fund for doing this and for, in a sense, breaching this border that keeps us apart. So should I just proceed and answer the question I have a question. has put to me? Now, Shabnam, I have a question, and that is also loaded with the question Mr. Akhund asked. So shall I start? Yes, please. Yeah, I would like to know your story, your and Vipul's story, and that why you thought to translate Bhittai, basically. As I know, you were a researcher who made 4 documentary films on Kabir, and your film Kabira Khada Bazaar mein won the special jury prize at the 52nd National Awards in 2011. My question will be that amidst such accomplishments, what intrigued you to aid Bhittai in your research and translate it as well? Ji. I think even the journeys in Quest of Kabir were not seeking a unique, singular voice. The journeys that I made questing for Kabir in India and to some extent in Pakistan, in fact, ये जो मक्खी और परवाने का किस्सा अखून साहब ने अभी बताया, ये मैंने फरीदुद्दीन अयाज साहब से सुना था कराची में. मैं कराची में उनके साथ रिकॉर्ड कर रही थी for my film हद अनहद, and that film ends with that kissa that we put into the book. So that nugget of wisdom came from Farid Sahab. I think basically what I will say is that all our work at the Kabir project, whether it is films or the archive we've built called Ajab Sheher, which is a large collection of, it's a digital archive that puts out all our recordings in Sufi Bhakti and Baul poetry and music in India and to some extent in the little forays we made into Pakistan as well. तो हमारा सारा काम एक तरह से तफावतों दिखाने वालों से मुंह मोड़कर हमारी जो एक शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हेरिटेज है, कॉमन लेगेसी है, उसको एक तरह से सेलिब्रेट करना, क्योंकि तफावतें दिखाने वाले लोग बहुत हैं समाज में, दुनिया में, चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, people who point out differences, people who are beholden to the project of seeking originality, purity, uniqueness, exclusivity. These are all deeply problematic projects. However, they may carry some weight and worth, but really it is the Sufis and the Bhaktas who taught us, who had the courage to keep bringing us back to a recognition of our porosity,
the porosity of our borders. We are not silos. We are not individuals. We are jewels in an Indra's net. We are, you are, therefore I am. We are not unique wonders that tapcoat from the Akash. We are embedded in a web of codependent arising. तो ये जो इंटरबीइंग वाला भाव है, ये सूफियों ने हमें इसकी राह बताई, कबीर ने बताई. तो शाह लतीफ भिटाई को इन्हीं सफरों के दौरान कबीर को पाते पाते हमने और कितने ऐसे लोगों को पाया, चाहे वो गोरखनाथ हो या ईश्वर दास, गुलाबी नाथ, मीराबाई, शाह हुसैन, बुल्ले शाह. और ये अगर आप एकेडमी में आए तो शायद इनको बहुत अलग अलग पढ़ा जाता होगा, सिखाया जाता होगा, लेकिन जब आप जमीन के स्तर पे लोक परंपराओं में जाएंगे, ordinary people of India and Pakistan, I imagine, people in the villages who sing this poetry, who deeply love and revere this poetry, don't just study it, वो तफावतें नहीं करते. It's like a folklorist C.P. Deval said once, and I thought it was a very marmic thing, कि लोक भेद नहीं करता, क्योंकि लोक समझ गया है कि वो सुपरी, वो पिरी, वो पिया बिना नाम का पिया है. That reality that we seek is beyond labels. So it goes without saying that when we ventured into Kutch, Gujarat, and we discovered Shah Abdul Latif's voice mingling along with Kabir's and Mira's and all these other poets, there was a great desire to know, to recognize, to learn, to share, and to discover. And in that spirit of finding resonance rather than difference, all our work is grounded in that, in some ways. So, I don't mean to here be stupidly idealistic or romantic about sarhadon ki koi zarurat nahi hai, we are all one kind of idealism. It is not that inspires this wisdom. एक नाम है, एक linguistic heritage है, एक particularity है, cultural particularity जो हम celebrate करते हैं, एक शरीर है, लेकिन इस शरीर में से एक छलांग भी आती है. और मेरे ख्याल से वो जो छलांग है जो हमें नाम से बेनाम तक लेके जाती है, हद से अनहद तक लेके जाती है, ये जो मूवमेंट है, ये डांस है, यही सफर में सूफी और कबीर हमें बार बार लाते हैं. तो इट इज नॉट टू डिनाई द प्लेस ऑफ सीमा या सरहद, बट टू शो इट इट्स प्लेस, and its place is small in the experience of being truly human, in the place of tasting the capacity of being human. क्योंकि ज़्यादातर most of us don't even really taste that. ना हम all our lives really are spent creating sarhads and territories and boundaries for our ego, individual or collective, and then quite like dogs, sorry to offend people here, pissing on our territories. So we might do it in more sophisticated ways, but essentially that's what we are doing. तो मेरे ख्याल से इस बात से ऊपर उठना, यही इंस्पिरेशन रही शाह लतीफ़ को समझने की, सुनने की. और इस सफ़र में जैसे जैसे हम और गहराई में उतरते गए, गाँव में लोक कलाकारों के बीच, तो it was quite wondrous to see both the resonances between Kabir and Shah Latif and the utter uniqueness and beauty of Shah Latif, which was very fresh and new for a person like me. So, in fact, I'd like to play back a small
audio recording. Can you give me the permission to Yes, why not? share that? Yes, yes. Okay. I hope I'm able to share this. You're sharing I think I the need common to be made co-host in order to share. some commonality between Bhittai and Kabir, or just you're presenting Kabir? No, what I'm going to do here is I'm going to share a small video, audio recording first of a recording that someone sent me just 2-3 weeks ago, a person called Ahmad Hassan from Pakistan. And it is a recording of Shah Jo Rag in some field area. It is an upload of Khana Badosh Baitak. And I will play that for you. You will have to make me co-host, otherwise I won't be able to play it. Requesting you to please make me co-host because I'm getting the message saying participant cannot screen share. You have to share the screen, or you are going to play the voice? I will play the voice, or okay, maybe I won't screen share. Uski quality थोड़ी बेहतर रहती if I could have. Let me play it anyway. Can you hear? Yes, please. Yes. I will just give the listeners a clue. ये शाह के रागी गा रहे हैं what they call sur Hindi parvo. Those of you who are familiar with the Risalo know that there is a sur in Shah Latif called sur Sindhi Barvo. Yahan they are singing a doha of Kabir. Kaga sabtan khayo, chun chun khayo mas. मोरे दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस. और ये कबीर का दोहा बिल्कुल वाई के अंदाज में, जैसे बेत और वाई गाया जाता है दंबूर के साथ. It has entered the orality of Shah Latif, and it's even been given a name, Sur Hindi Barvo. Please listen. Can you raise the volume, Shabnam? No, fine. So I hope that was clear. I must say I was completely wonderstruck to hear this this recording of a Kabir Doha spun into a bait with dhambur. And it is this kind of porosity that I think really moves me, to find that there are no compartments in a sense. And now I'll just share with you some resonances between the Kabir and the Shah Latif poetic tradition, where I find it quite magical to see that as we began our research, we would come across motifs, metaphors, ideas that were so resonant. जैसे कि हमने सुना था, नैना अंतर आव तू नैन झांप तोहे लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखण दूं. ये हमने कबीर के हवाले से सुना था. और जब हम कच्छ में गए तो we came across this.
अखियन में अची वे तवारे आऊं ढकियां तोखे न डिसी दे ने आऊं न पसां बियो को so it was quite magical to discover these consonances or many of you may have heard this bait. I will share the doha of Kabir and I will share the bait of Shah Sai. Kabir says, चाखो चाहे प्रेम रस राखो चाहे मान दो खड़ग एक मियान देखा सुना नहीं कान. Kabir is saying either taste the nectar of love or keep your pride and ego intact. Trying to fit two swords in one sheath, I've never heard of such a thing. अब शाह साईं क्या कहते हैं? की ना माइंदा मने खुदी का बिन तन जाए. You will forgive me for my Sindhi. It's not the best, but I'm trying. So this we translated as, how will a single heart house both self and God? There isn't space for two swords in a single sheath. या कबीर एक और सिमिलर आइडिया इस दोहे में बताते हैं. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही. प्रेम गली अति सांकरी, या में दो समाए नाही. You know this, when I was, Hari wasn't. Now Hari is, I'm not. The path of love is slender. Two just cannot fit. Similarly, कबीर की बहुत ही एक फेमस पोएम है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई. जिसका जवाब उन्हीं के शिष्य और बेटे कमाल ने दिया था. चाकी चाकी सब कहें, खीली कहे न कोई, जो खीली से लाग रहा वाको बाल न बांका होए. So the grindstone turns and whirls, Kabir watches and weeps. Caught between two slabs, no one was left whole. Grinding slabs are all they see, no one notices the center pin. A few grains draw close to it and escape unbroken. और जब हम कराची में शूट कर रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर सूफी गायक से हमारी भेंट हुई, शाह शफी फकीर साहब. उन्होंने ये गा के सुनाया. जंधर पिहंदे जेडियूं थियो केड़ो कीस करन, के पीस जी पामाल थिया के घुमरण मंज गरण. साबुत सही रहन जे काबू रहया कीर से. So there was a lot of wonder in discovering all these resonant, echoing poetic images and motifs. And of course, one had heard poems of Kabir like, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं. शीश काट भोई धरे तब बैठे घर माही. Okay, I'm here. No, I will talk to the morning. It's okay. Ejaz Sahab, you'll have to mute yourself. Sorry. Thank you. So, encountering this doha of Kabir, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही. शीश काट भोई धरे तब बैठे घर माही. इसमें सर को काटने की बात है. And this is not a very extensive poetic image in Kabir. So then when we ventured into the poetry of Shah Latif, tab to it was amazing to discover this image of cutting off the head express itself in such rich diversity and detail, whether in Sur's Yaman, Kalyan,
or Sursurat in the story between Raidiach and Bijal, where Bijal is the minstrel and a guru figure who asks him to cut off his head. And also, when I was shooting Had an Had, Shafi Fakir Sahab sang this: Sar darre kadam yarish fida shud che baja shud, I bare gira bude vada shud che baja shud. Sir dar qadam yar fida shud che baja shud, I bar gira bud ada shud che baja shud. And yes, thank you. The idea of cutting off your head and placing it at the feet of the friend being just as well. The idea that this head is too heavy a burden. The head that we ordinary people guard and protect so much, for a Sufi it is the cheapest thing to give away. It's like Raidiach says to Bijal, is this head all you want? It's a really cheap deal. In one of his bets he says. So to discover this entire poetry unfurl in Shah Latif about the idea of cutting off the head, to discover it even in the socio-political history of the Sindh region through the figure of Shah Inayat Shahid of Jhok, to discover the story of not just a Sufi speaking about philosophy and writing poetry and abstract symbolism, but to discover the figure of Shah Inayat Shahid, who was actually a farmer revolutionary who gathered, who created a commune which upset the local political establishment and religious establishment of that era. Which literally led to his head being cut off. And it's very moving to see how in the lore around Shah Inayat Shahid, the head travels all the way to the Sultanate in Delhi. It continues to speak a stream of verse, of which this Sar darre kadam yare fida shud che baja shud is one that has survived as an iconic memory of Shah Inayat Shahid. But that poetry is called Besar Nama. It is the ballad of the headless. So for me, this journey of discovering all this history, because it's almost easier to speak in the poetic and the abstract, but to see it come together and in the lived socio-political, where someone's head was really cut off, and to see the links between that and Sur Karayal, which is, I think, a connection that not many have made, which was very exciting for me to discover and make those links, listening to folklore on this side of the border as well, which have similar images coming from the historical event of Shah Inayat Shahid. तो ये बहुत मैजिकल एक दौर चला कबीर के इस शीश काट भोई धरे वाली एक पोएम से लेके टू डिस्कवर दिस एंटायर पोएटिक्स थ्रू शाह साईं and through the history of Sufism in Sindh. And I'll speak a little bit about the idea of death और मौत की जो कैफियत है, फना की कैफियत जो सूफी की होती है, वो that is so resonant with Kabir again. मेरे ख्याल से in the keynote address you were very kind to quote this one poem of ours from Shah Sain, crashing, crumbling, dissolving, disappearing, the whole world scatters in a moment. Your dear one's feet stomp the earth over your head. In all moments we carry a spade and a string to dig and measure out our graves. Now, to say that this is extremely resonant with the spirit of Kabir is an understatement. क्योंकि कबीर की कैफियत में मौत हर दम
आपकी नजरों के सामने खड़ी है. That is what makes you a bhakta. That is what makes you a Sufi. तो Kabir will say, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेई बजाए, ये शहर ये गलियां देखे ही छूट जाए. The drum rolls of the self beat for just 10 days. It will vanish in a flash, this city, its alleys and ways. रोवनहार भी मोए यानी मर गए, मोए जलावनहार, हाय हाय करते ते मोए, कांसों करो पुकार. Dead man who lit the pyre, dead those who saw the body burn, dead the mourners, dead the sobbers. Now to whom will you turn? वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, कबीरा ना मुआ, जाके राम आधार. Saviors die, sufferers die, everyone's drowning and dying. Only Kabir stays alive. Ram threw him a lifeline. Anyway, so I just wanted to say that these consonances between two great poetic voices was a very exciting thing to discover in our research into the oral traditions of Shah Latif. But Shah Latif, of course, is utterly, gloriously distinct and unique from Kabir in that he revels in the topography of nature and, in a sense, the real land of Sindh that he traversed and discovered and knew so intimately. To discover that quality of poetry in a Sufi's voice where he entangles you emotionally with the wind, with the clouds, with the mountains, with the earth, with the sun, with the moon. He quibbles with them, he quarrels with them, he makes them friends and allies. And they are always resonant of some internal truth. The mountain that Sassi battles is her internal roadblock at some level too. And when she crosses that internal hurdle, the mountain becomes a friend. The mountain sits and weeps with her. So it's so moving. These things you don't discover in Kabir. शाह साईं के कलाम में तो ड्रामा है, किरदार हैं, कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, प्लॉट है, नैरेटिव है. This is completely, it was enthralling to discover all these stories and actually to discover shades of these characters in one's own psyche, in one's own psycho-spiritual universe, and to discover those moments where you feel like a Sasti or you feel like Marui trapped in a fortress that is your own mind, held hostage by Umar, who is your own nafs, your own small ego. To discover that moment when you feel like Sassi, when you have the courage of transgression, where you take the leap, where you plunge. To discover Sassi, where you taste the power, the dignity of sorrow, the dignity, the path of sorrow. Acho suran variyu, karyu sur pachar, kini ghana, kini thorda, नाय कोई सूरन कांधार, मुके दिना जे दातार, मुँह झोली पाए झलियां. So this is very, very, very new, was very new, to discover this quality of emotional, spiritual textures. You don't find this in Kabir. तो बहुत मज़ा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला in this journey, despite our limitations of not understanding Sindhi, not being able to read it, not being
very well versed in the Sufi tradition. It was a journey and a path of discovery, and we, I think, have only just put our toes in the water, in the waters of Shah Sai. So it is very gratifying and humbling to have this book published in your land. So thank you again. Thank you, Shabnam ji. I have a few more questions, but before, I had an idea when we were talking about Kabir. Akhun me thi vehe taun ware dhakya tokhe disse na dehe aun pasa ki, and the exact translation of the Kabir's Doha. And when we draw analogies of Bhittai with Persian tradition as well, and I see there are some 40 baits, 40 or 41 baits of Shah Bhittai, which are exact translation of Maulana Rumi's verses, not idea, word to word and line by line translation. So perhaps I wonder that in previous times there was no idea of or narrow-mindedness to rate it as a plagiarism, so that in Sufi tradition you can borrow the idea and present in your own language. I would ask a different question now about legacy of Latif in your part of Kutch. As you have said, आपने कहा है अपनी किताब में भी, जब बरे सगीर की तक़सीम हुई तो सिर्फ it was not a partition, geographical partition, but भिटाई का जो अपना कल्चर था या कल्चरल लेगेसी थी उसका भी पार्टीशन था. उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आप ये बताएं कि what is the legacy of your side of border on the one hand? This is one question, and I also relate this question to what you said about Kabir, that you have been with Kabir Panthis and you made faqirs of Bhittai as well. Now, what are the similarities and what are the differences Kabir Panthis and Bhittai faqirs, and how you see them in your own idea of especially when we talk about those faqirs who are in that part of the land. They never visited shrine, they don't meet the people. Whatever the exegesis are being written on Bhittai, they are not aware of it. But still, what are the binding forces that make them sustain or nurture that love and passion for Bhittai over there? So there are a few questions together. I'm asking, yeah. Thank you, Sahar ji. आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, but I think I got the drift of your question. I think the legacy of Shah Latif on this side of the border is not a very thriving or a robust one. In fact, the singers of the white tradition, which is mostly members of the Jath herding pastoral communities in Kutch and Rajasthan, they sing Shah Sai quite like the faqirs of Bhitshah Dargah. They sing on a dhambur, the bets and wives of Shah Latif. Simultaneously, there are many Hindu Dalit folk singers of Kabir and other voices and other mystic poets who also sing Shah Sai in the tradition inspired by Mohan Bhagat and Kamar Ram, which is where they sing on the tambura, the kafis of Shah Sai. So it is a tradition that I would say is struggling to, it's surviving, but it's not thriving. I think that's the difference. It is surviving in a context where there are very few Sindhi speakers, people who understand this Sindhi poetry. So a lot of the poetry which non-Sindhi folk singers will sing of Shah Latif, the words get mixed up, the meanings get confused, they're not very alert to the language. तो वो definitely है, लेकिन एक भाव जो है, एक feeling वो बरकरार है, और एक reverence भी बरकरार है.
और एक सिक, एक प्यास बिल्कुल ही बरकरार है. But I say this with some semblance of sadness, or not sadness, but just worry in a sense, because I don't think this art form of Bai singing on this side of the border is getting enough nourishment. And maybe digital exchanges will help bridge that, where listening and having mutual exchanges across the border between the wife singers and the fakirs of Shah Latif on this side, and communication and exchanges might enrich that. Otherwise, it's a tradition that's surviving but not thriving. Yeah, that's all I'll say. Okay. So I would like to talk about oral tradition of Bhittai's poetry. Last time when we had our program together in Sindh Literature Festival, we discussed about, you had read one Vai to me. Which I was planning to read again. So you please give me the honor of reading it, because that's the only sample I managed to gather. I'd be happy if you recite that, Shabnam ji. But I have, Yes, you know what I did? I tried to search that Vai all over the internet and from people. I sent almost Yes. every friend of mine who knew about Bhittai. And I got different versions. And I got different versions of that Vai, and in some versions certain lines were mentioned and some not. So when you recited fully, the one that you sent me and Yes, the I one will. that I have, it's a bit slightly different, because mine has few more lines added. So I'd be happy if you recite it and then I recite afterwards. Thank you, Please. Seherji. So basically, your question was about the beauty of an oral tradition of a mystic poet. You know, I feel a mystic, a Sufi or a mystic who's truly worth his salt leaves behind a growing republic of poetry. It doesn't stay frozen in one text as the authentic original. It grows because people make it their own. They love it, they add to it, and उनका उव्र बढ़ता चला जाता है. तो हमने इस किताब में भी उस ओरल ट्रेडिशन में से कई ऐसी पोएम्स यहाँ इंक्लूड की जो हमें रिसाले में नहीं मिली. And here I would really like to pay my acknowledgement and tribute to the late Abdullah Hussain Turk, Haji Sahab as he was called, to whom this book is also dedicated, because I don't think without him literally holding our hands and walking us into this universe of Shah Sai, we would have discovered Bhittai in the way we did. Abdullah Hussain Turk ji was an incredible walking, talking, breathing individual, जिनकी हर सांस में Shah Sai the actually. I would also pay tribute to Umar Haji Suleiman Sahab, who is another Gyani of Shah Sai, from whom we've learnt a lot. The singers Mitha Khan and Sumar Jat. There are many younger seekers as well, Anwar Luhar, Mazharuddin, from whom we have heard these oral poems of Shah Sai. And this particular one we heard from Abdul Hussain Turk. It is a moment where Sassi is saying, I will conquer and I will find my Punu no matter what. So she says here, Karra dungar kah ghani ma chotiye te chadan diyas munji bol baroch se aau pere pand kandiyas pere pand chhadiyo ta aau gode ghisran diyas gode ghisran chhadiyo ta aau chel bar choran diyas चेल पर चोरन छड़ियो तो सीने से सोरन दियास सीने पर सोन छड़ियो तो ठूठे ठड़कन दियास ठूठे ठड़कन छड़ियो तो हथन से हलीन दियास हथे हलन छड़ियो तब अखियन से इंदियास
माड़ू थई मिरुअन में सब जंगल जागींदियास, पखी थई पखियन में सब सर सोधींदियास, माड़ू थई माड़ुअन में सब गोठ गोलींदियास, इन पर अब्दुल लतीफ चे आऊं पुनो देवेंदियास, पो मिलई तो मिलियास, न तक गोरई जान जतन का. Very beautiful. In fact, we are in the process of editing a series of short films which we call the Lockdown Film Series, Ajab Mulaqatein, which are interviews and conversations we've had with seekers, lovers of Shah Latif, Kabir, Mirabai, Ghulam Farid, when we were all locked down, essentially sitting at home. So these are all Zoom conversations, magical moments of digital intimacy, if you will, where distances got bridged through Zoom. And so we've started editing and putting out some of these films as part of a series called Ajab Mulaqatein. And right now we're editing a film on Sassi, where we'll edit in this poem that I heard from Abdullah Hussain Bhai, and you'll see it in this. And all these films are part of our digital archive, Ajab Sheher. Okay. Shabnam ji, I have a last question to ask from you. Apart from your work in filmmaking, archiving and writing, you have also begun to sing yourself on these journeys of yours. Would you like to sing something for us today, either from Kabir or Bhittai? It's up to Sure, you. I can. Yes, I can do something small. My repertoire of Shah is very limited, but I will share a poem by Shah in Sur Sohini. And here again I see the wonder of Kabir and Shah gently jostling shoulders. So this was a doha of Kabir that I had heard. जिन खो जाता पाया गहरे पानी पेट मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ. Kabir is saying, the one who really searched, who gave it her all, she found. Gehre pani pet, she plunged into the deep waters. And then he says ruefully, wistfully about himself, मैं बोरी डूबन डरी, me, I stupid girl, मैं तो डूबने से डरती रही किनारे बैठ. So this image, as you know, is the center of this amazing narrative of Sohini Mihar. So I'll sing a small kafi that I have heard and heard from a beautiful singer called Muralala Marwada ji in Kutch. साहड़ कन किन्नी सांगो साहजो के घोरयासी कयो खिड़न साहड़ संधोतिन
रे रे घा घाए घिड़न जे अच्छी मिल यार में अच्छी मिल यार में मोतो कमीनी को न कमायो रे अला मोतो कमीनी को न कमायो रे अला पंज साहड़ के तू संभाल अच्छी मिल यार कच्चर मुझे कर कच्चर मुझे कर केड़ो डियार कुम्हार अच्छी मेलिया हार में पंज साहड़ के तू संभाल अच्छी मेलिया हार में लड़ में झान उड़ दी लड़ में झान उड़ दी तरियो नहीं जाना तार अच्छी मिल यार में मोतो कमीनी को न समायो रे अला हाँ शर्त्यों शाह लतीफ छे हाँ भिट जानी गो लतीफ छे मुन्ही के छाल मिला हायरीला मुन्ही के छाल मिला अच्छी मिलिया हार में अच्छी मिलिया हार में अच्छी मिलिया हार में वेरी ब्यूटिफुल शबनम, आपने तो यहाँ पे सबको झुमा दिया. Thank you very much. I once again congratulate you and Vipul Rikhi for publishing this wonderful book. And I give now mic to Hamida Hun Sahab to move the program further. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shabnam. Khuda khush rakhe. We hope one day
as I told you earlier, and you expressed your doubts, but hope one day you will sing at the Bhittai shrine with the fakirs. That's all what I can say. And thank you. Thank you so much. आपके मुंह में घी शक्कर. Badi Virmani, thank you. I have known the family. His mother, of course, we respected a lot. And is he here? I asked Parijo. Ji? Gee, I don't have much of a discourse or understanding with him, but his mother, we had a lot of respect, his father, and they were a resounding voice for the cause of Sindh and for the people of Sindh. And I remember at Bhittai, when Gigi Zarina would recite G.A. Sindh, the entire administration would tremble. And I'm not exaggerating this. And there were many occasions when I was told and warned that, you know, she must not sing G.A. Sindh. And however much we would tell her not to, she would do it. And when I would tell her, Gigi, cha kya hua? She said, Baba, I don't samjhe. And I also remember, I don't know whether you remember it or not, there was a time when you were probably guest of the martial law government for some time. And my friend Zafar Kazmi took Gigi Zarina to the DMLA's office, whose chief of staff was a personal friend, and therefore Zafar knew him. So Zafar told him, Zarina Baloch, and that man jumped in his chair and he said, what? It's Zarina Baloch and we've come to talk about his son. So he came out and then he called me. He said, yaar, tere ye dost ne kya kiya? I said, suno usko, isme aisi kya baat hai? So he is known more as a die-hard politician, but today I have requested him, and also there was, very many people said that Ayaz speaks well on Shah Latif. So Ayaz, you in the mic. Thank you. सभा का पहिरीं त आऊं हमीद आखून साहब खे मुबारकबाद ॾींदुसि ऐं एंडोमेंट फंड खे ऐं आर्ट्स काउंसिल खे ऐं मुबारकबाद ॾींदुसि शबनम विरमाणी साहिबा ऐं संदसि कॉलीग खे जिन अहिड़ी महिनत कई आहे, रिसर्च कई आहे, ॿिया सभु कमकार छॾे राजस्थान ऐं ॿिया भर पासे जा इलाइक़ा घुमिया आहिनि। मूं हुननि जो सॼो किताबु तड़ तकड़ में पढ़ियो पे, आखुन सां मोकिलियो हो, शेर पढ़ियमि पे, ॿ टे तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां, पोइ वरी पाण लतीफ़ साईं सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। माना जंहिं नमूने ज़ाहिर आहे एग्ज़ैक्टली तर्जुमो कोन थींदो, उनजो रूह, they struck a wondrous deal, the string, the dagger and the head. But is this all you came for, minstrel? From so far away, my head is not worthy of you. Sindhi de potalu. Death came and shook the sleeping Sasui. She awoke thinking, has Punu sent a messenger? Reverse your gaze. Go against the grain. People plunge downward. You should soar to the sky. Look inward to reach your beloved. Beloved tied me and flung me into the sea.
standing on the shore, he said, "Watch out, don't get wet." कमाल है, लतीफ़ साईं कमाल है, वरी उनजी तर्जुमे जी कोशिश कमाल है। सवेल आखुन साहब पंहिंजे इंट्रोडक्टरी ॻाल्हि में चयो शुरूआत में, त छा तय कयूं, छा सोचूं, त लतीफ़ साईं मोहब्बत जो शाइर है, प्यार जो शाइर है, ॿिया सवाल अमन जो शाइर है, इलाही सारनि शयुनि सां गॾु प्यार जो शाइर है, या अमन जो शाइर है, या मोहब्बत जो शाइर है, या जुस्तजू जो शाइर है। If I would have been asked, मूंखां जेकर किथे ईअं चइजे त हिकिड़े जुमिले में ॿुधाए, त आऊं सम्झां थो त लतीफ़ साईं बग़ावत जो शाइर है। बुत शिकन आहे रिवायतुनि जो, रिवायत शिकन है, मुरवजा उसूलन, रीतुन, रस्मुन, रवैयन, उन खणी मथां ठगा कराइजे पट ते, पोइ टुकड़ा टुकड़ा थी वञे, चूर चूर थी वरी ॿी शइ ठाहिजे। सॼी दुनिया में उन दौर में, वरी हिन दौर में, उन दौर में किसा कंहिंजा ॻाइबा आहिनि, खरबपतियुनि जा, उन ज़माने जा खरबपति, अरबपति उन ज़माने जा, उन ज़माने में अरबपति कोन था, हज़ारपति हूंदा, पर उन ज़माने जा माण्हू, बादशाह, ड्यूक्स, लॉर्ड्स, एम्परर्स, प्रिंसेस, किंग्स, फ्यूडल्स, वॾनि माण्हू, वॾा माण्हू, हीरोज़, वॾा माण्हू। ऐं पोइ जे वॾनि माण्हुनि जी ॻाल्हि छॾे ॾिसजे त वॾा माण्हू केरु, सभु मर्द। हीरो सभु केरु हूंदा, मर्द हूंदा न। हींअर बि सॼी दुनिया में जॾहिं फिल्म साइन थी थिए त पहिरीं कंहिंखे था खणनि, हीरो। रॉबर्ट ब्रेडफोर्ड सां केरु ईंदो, ब्रैड पिट सां केरु ईंदो, सलमान खान सां केरु ईंदो, पोइ हीरोइन तय थी थिए। कोर्स में भी है, पढ़ाइनि में भी है, खणी किताब ॾिसो, सभु हीरोज़ मर्द। हाणे न वॾा माण्हू न मर्द, ऐं पोइ औरतूं बि ॻाइजनि थियूं। पोइ औरतूं कहिड़ियूं, करोड़पति, अरबपति। पंहिंजे समाज में औरतूं कहिड़ियूं, हिते न सॼी दुनिया जे समाज में। बिल गेट्स जी ज़ाल जो ज़िक्र थींदो न, ज़िक्र त उन्हनि जो थींदो, मिशेल ओबामा जो थींदो। वॾनि माण्हुनि जूं ज़ालूं या अरबपति या खरबपति, रेयरली, को तमामु थोरो एकड़ बेकड़ ॿियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं ॿाहिरि, पाण वटि त उहो बि कोन्हे। सो वॾा माण्हू बि न, अरबपति बि न, मर्द बि न, पैसे वारियूं औरतूं बि न। हाणे हीअं खणी जो पट ते हणे थो त औरतूं कहिड़ियूं, नूरी मुहाणी, मारवी, थरियाणी, हारियाणी, पंवारनि, सुहिणी, कुंभारनि, ससुई, धोबियाणी, मोखी, शराब खपाइण वारी। समाज में जेके माण्हू सभु जिन ते तानो थिए, जिन ते हींअर ई महणा आहिनि, हींअर ई चऊं था फलाणी, मर्द जेकॾहिं करे अख़बार में पढ़ियो अथव त मर्द भॼी वियो। का सिंधी अंग्रेज़ी उर्दू अख़बार पढ़ो, मर्द भॼी वियो। मर्द कोन लिखंदा, मर्द चवंदा प्यार जो परणो कयो, ऐं माई भॼी वई। मर्द प्यार जो परणो कयो, माई भले पढ़ण हले, माई भॼी वई, छोकिरी भॼी वई। आउं वियुसि जो ई मूं तकरीर कई, मुंहिंजो सिंधी नियाणियुनि खे पढ़ायो, चई कोन पढ़ायोसीं, भॼी वेसनि, भॼी वेसनि। हाणे हुन लतीफ़ ग्लैमराइज़ कयो आहे। लतीफ़ को कोन थो चए त घर छॾे भॼी वञो। लतीफ़ उन ज़माने जे मुरवजा उसूलनि, रीतुनि, रस्मुनि खे पट ते हणी कढियो, ठका ठा टोड़े केॾी। हाणे कीअं बग़ावत आहे, हर शइ खां बग़ावत आहे, हर शइ खां। माण्हू चवनि था पक हुजे, अबा नौकिरी पक मिलंदी, हीअ डिग्री खणा पक थींदी, भला हिन जो संग मिलंदो, भला ॿाहिरि वेंदुसि इंग्लैंड, लंडन, अमेरिका, को जॉब वॉब मिलंदी कोन मिलंदी, गुज़र थींदो, हेॾा पैसा ॾिना त नौकिरी मिलंदी कान मिलंदी, या हड़ ॿुॾी वई, सॼो ॾींहुं पक आहे। लतीफ़ पक पक सां वास्तो ई कोन्हेसि, पक सां वास्तो ई कोन्हे लतीफ़ जो। मूंझारनि खे पसंदि थो करे, सवेल ॻाल्हि थी,
गौरा ॿई पार, गौरा ॿई पार हियो हैरत में पियो। मुंहिंजी पई आहे, पाण सभु मुंझल कोन आहियूं। हिकु नौकिरी कयूं, घर हलायूं, ॿार संभालियूं, सॼो ॾींहुं जुस्तुजू आहे। मां वॾो थिए त दाख़िला मिले, दाख़िला मिले, एंट्री टेस्ट पास कयां, एंट्री टेस्ट पास कयां, यूनिवर्सिटी वञा, यूनिवर्सिटी वञा, नौकिरी मिले, नौकिरी मिले, पोइ शादी थिए, शादी थिए पोइ ॿार ॼमे, ॿार ॼमे पोइ ॿार वॾो थिए, पोइ स्कूल थिए, पोइ ॿार वॾो थियो, पछाड़ी में माण्हू उन्हनि ॿार नुंहंनि ऐं निणान जी गिला, पोइ वरी माण्हू चए अलाह मूंखे पंहिंजो करे वठि। गौरा ॿई पार हियो हैरत में पियो, जे वेहां त वेर मथी, वेहां त देर थी वञे, वेहां त वेर मथिए, नींहं में पोइ निहार, फ़र्क़ु अची वञे इश्क में, विथी अची वञे, जे वञा त वाको थिए, पाड़े पोइ पचार, सॼे ॻोठ खे ख़बर पइजी वञे, छा कयां? हुत थी वादे वार, हुते वादे जो सॾु आहे, हिते सूटूं ॾींदमि सर्दियूं, हिते सर्दियुनि जा महणा आहिनि, रुकावटूं आहिनि, सॼी ज़िंदगी ईअं आहे, सॼी ज़िंदगी सुहिणी। पढ़ो ससुई जी ॻाल्हि पहले सुहिणी, मथां घड़ी सुहिणी, तव्हां लाइ, सभिनी लाइ, पाण सभिनी लाइ, मथां घड़ी सुहिणी, अॼु दरिया में दम, कारी रात कुननि में कहिड़ो अथई कम, इहो असांखे चवंदा आहिनि माण्हू। मथां घड़ी सुहिणी, अॼु दरिया में दम, कारी रात कुननि में कहिड़ो अथई कम, मथां जागे ॾम, पुछे पाड़े वारियूं। केॾां वई अबा, पुछ केॾां आई कान्हे? पाण चवंदासीं अदा गिला थी पवंदी, पाण सभु छा गिला थी पवंदी, मथां माण्हू चवनि, चवंदी पुछी पाड़े वारियूं कोह करींदो ॾम, पाड़े वारनि खां पुछी कहिड़ो आंगूठो पटींदो, पुछी पाड़े वारियूं कोह करींदो ॾम, कारी रात कुननि में ई काणियारनि कम, ही हॾो ऐं चम, घोरियो मुंहं बि मुहार था। कुर्बान, पाण तलाश में बग़ावत कीअं? पाण तलाश में मंज़िल, मंज़िल, मंज़िल किथे आहे? मंज़िल, मंज़िल पोइ छा थींदो? यूनिवर्सिटी खां पोइ छा थींदो? घर वठंदुसि पोइ छा थींदो? घर मिलंदो कोन मिलंदो? मंज़िल, 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 मंज़िल आई कान्हे न। मंज़िल कींझर ते पिकनिक ते वियासीं, मंज़िल, मंज़िल वरी छा जी? कींझर जे पिकनिक ते वञण लाइ जेको प्लान ठहे थो, उहो सॼो प्लान ई वर्थ कंसिडरिंग आहे। जेका जुस्तजू घुमण रुगो को आख़िरी पहाड़ जी चोटीअ ते गोरख जे मथां पुॼण थोरी आहे। गोरख वञण लाइ जेका तयारी, जेको बसुनि में ॻाईंदो वञण, जेको ॿोड़ रधण, जेको मोकल वठण, जेको गीत सोचण, जेको सामान खणण, जेको थेला तयारु करण, इहो सॼो मज़ो आहे। सॼी शइ प्रोसेस में मज़ो आहे। उमिरि सभु इश्क सी पुनूं जे पुछनि, उमिरि सभु इश्क सी पुनूं जे पुछनि, रीस रेज़ालियूं तिनसी गुजाड़े के कन। उन साईं हलकड़ियूं मायूं छो पियूं री सकनि जेके सॼी ज़िंदगी पुनूं जी पुछा में। उमिरि सभु इश्क सी पुनूं जे पुछनि, रीस रेज़ालियूं तिनसी गुजाड़े के कन, मारग जे मरन वॾो ताल तिन जो। जेके मंज़िल ते न, जेके रस्ते ते मरी वञनि, वॾो नसीब तिन जो आहे। मारग जे मरन वॾो ताले तिन जो। मंज़िल ते मरी वञो, जुस्तजू में लॻा पिया हुजो, कुझु न मिले, हलंदे हलंदे मंज़िल ते मरी वञो, इट्स मोर देन नफ, इट्स सफिशिएंट। काफ़ी आहे त तव्हीं मंज़िल सही ते हुजो। ऐं बग़ावत, मां चयो बग़ावत, बग़ावत कीअं? मुरवजा उसूल, रिवायतूं, ख़ूबसूरती, ख़ूबसूरती, सुठा कपिड़ा, रेशम, अतलस, बखमल उन ज़माने जा, उन ज़माने जूं लालियूं, टिका, उन ज़माने जा हंस, उन ज़माने जा हार, गरबियूं, छीटूं, ख़ूबसूरत कपिड़ा। ऐं हेॾा गंद जिनी जे गोद में पाबोड़ा पोशाक, पाबोड़नि जे वलियूं जिन जे गोॾनि में फाथियूं पयूं आहिनि। गंद जिनी जे गोद में पाबोड़ा पोशाक, उन्ही जे ओताक राजा रीझी आयो। राजा उन्हनि जी ओताक ते हली आयो आहे। कारियूं कोझूं कुवड़ियूं, कारियूं कोझूं कुवड़ियूं, मूर न मोचारियूं, खणी वेठियूं वाट ते खिखीअ जूं खारियूं, उन्ही जूं आरियूं
समेरी केर सही मथन टुबकड़ा चिकंदड़ा अचन मथे ते बास्केट्स तन नंढड़ा नंढड़ा टोकरा तन नंढड़ा वॾा अचन पिया परे खां मारवी जा माइट को ठठ टांगर वारा लय वारा कोन्हनि अचन पिया उन्हनि खे बि यादि करे मथन टुबकड़ा चिकंदड़ा अचन खुड़ियूं कह भुकलियूं पघर सिर पेरन ई वड़ वेड़ी चन मूं लोडाई लखिया हलण जी लोड मां सम्झियत इहो वड़ वेड़ी चन जो आहे कॾहिं कॾहिं कोन तव्हांजा महबूब तव्हांजा मिट माइट प्यारा पुठीरा पिया वेंदा आहिनि त हुनजे हलण मां सम्झी वेंदा आहियो ई वड़ वेड़ी चन मूं लोडाई लखिया ही मुंहिंजा मारू आहिनि भुकलिया भूणनि धड़ खे गॾियो धूड़ में ॻाल्हियूं ॻहले लोकसी पधर पट न कनि कामुल आहे तिन मूं परियां जी ॻाल्हड़ी भरिया पिया आहिनि धूड़ में ॿेड़ी ॿुॾी पई अथनि कपिड़ा ख़राब अथनि पर कम वॾे वारा माण्हू आहिनि तंहिंजे करे बग़ावत लतीफ़ बग़ावत उम्मीद न पाण चवंदा आहियूं अदा ठहियो कमु कोन थियो पर उम्मीद त आहे लतीफ़ चए थो उम्मीद फज़ूल शइ आहे उम्मीद बि न कयो उम्मीद न पाण चवंदा आहियूं ठीकु आहे ॿी सभु शइ उम्मीद कीअं विञायूं ना उम्मीदी याजको जेको पोछड़ आहे न इहो असांजो ना उम्मीदी मुंहिंजो सहारो आहे उम्मीद न ना उम्मीदी याजको ओछण आदे सिन कॾहिं ताज़ी पुठ ते ताज़ी कॾहिं ज़िंदगी आहे न कॾहिं माण्हू ताज़ी घोड़े ते सवार आहे ना उम्मीदी याजको ओछण आदे सिन कॾहिं ताज़ी पुठ ते कॾहिं हेठि हलनि सामीअड़ा समूंड में तुम्बे जीअं तरन जे वाॻूअ वात वञनि त कुसन कुछनि कीन मरी वेंदा कुछंदा कोन शिकायत कोन कंदा हिकिड़ो चवंदा आहिनि के मुल्क में हिकिड़ो हरण रिवायती तसवुराती जंहिंजे दुन में मुश्क आहे हुन हरण खे ख़बर कान्हे त इहा मुश्क किथे आहे हू वेठो ॻोल्हे सॼो ॾींहुं पियो फिरे इहा ख़ुशबू किथां पई अचे उहा हुनजे दुन में आहे उहा हू सेंसलेस आहे हुनखे अंडरस्टैंडिंग कान्हे त किथां पई अचे ऐं ॿियो चवनि था हिकिड़ो पखी आहे तसवुराती हुमा पखी जंहिं लाइ चवनि था त उहो पियो उॾामंदो आहे कॾहिं बि हेठि न लहंदो आहे ऐं चवंदा आहिनि त उन पखीअ जो जंहिं ते पाछो पइजी वञे उहो बादशाह थी वेंदो आहे हाणे लतीफ़ साईं चए थो हीअ ससुई जो सॼो ॾींहुं धिका पई जले सवेल ॿुधायो दोस्तनि त हेॾां पई होॾां पई हेॾां पई एॾां जो वञे पई त इनखे आख़िर बेचैनी कहिड़ी आहे जीअं सो हरण हुमाओ सरगर्दा संसार जो हरण ऐं हुमा पखी हरण जीअं सो हरण हुमाओ सरगर्दा संसार में ही पग न खोड़े पटिए हू धड़ सर धरे न साह ही पग न खोड़े पटिए हू धर सर धरे न साह शायद तिन मुलाओ ससुय सूर पिराया उन्हनि खां ॾिसी जीअं हुननि खे ख़बर कान्हे पिया हलनि तीअं ससुई पई हले ऐं ससुई पई हले संदसि उठ पिया हलनि संदसि उठ जेके भॼी विया आहिनि उन्हनि जी ॻोल्हा में हीअ बि हले पई माण्हू भॼी विया आहिनि हीअ पोयां लॻी अचे घस ॾिठो तव्हां लॻी अचे त इहा जेका जुस्तजू आहे जेका बेचैनी आहे ऐं उन बेचैनीअ में ॿी बग़ावत माण्हू चवनि था असांजो क़दुरु थिए भला क़दुरु न थिए त पोइ माण्हू यादि कनि पाण छा था चाहियूं वेंदा आहिनि अस्पताल में फलाणो वार्ड फलाणे ॾिठो फलाणी सबील फलाणे ठाही आहे फलाणी शइ फलाणे माण्हू ॾिनी आहे मुंहिंजो नालो थिए पाण सभु चाहियूं था मुंहिंजो नालो थिए नाले सां वास्तो ई कोन्हे त नालो थिए या न थिए अची इज़राइल सुते जाॻाई ससुई थी डोड़ाए दलील त पुनूअ माण्हू मोकिलियो हिसाब किताब पोइ पुनूअ माण्हू मोकिलियो मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई अॻियां उथी उनखां पुनूं पुछाई अदा हितां ई को वियो साथ सॼण जो को मुंहिंजो महबूब त कोन लंघे वियो आहे हितां मुंहिंजो महबूब त हिन गस तां कोन मटे वियो आहे तंहिंजे करे इहा जेका शइ आहे हाणे इनखे इहे हुजतूं लतीफ़ साईं करे सघे थो तव्हीं आदि फहमीदा ऐं तव्हीं आदि नूर आदि हमीदा आख़ुन साहिब करे त फिरी ईंदनि माण्हू
तंहिंजे करे ये हुजतूं जीअं इकबाल करे वियो आहे, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, अबू बिन अदम न, his name is there. ॿे दफ़े आयो एंजल, चई मुंहिंजो नालो हुन लिस्ट में लिखिजे के ख़ुदा जे बंदनि सां प्यार कनि था। मोटी आयो, चई हाणे छा खणी आहीं? चई उहा लिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स गॉड लव्स, जिनखे ख़ुदा तो प्यार करे, गॉड लव्स हूम। चई हिज नेम इज देयर, चई हिज नेम इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो चयो था खुदा जे बंदन सां प्यार तो फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। उन्हनि जो माण्हू थींदुसि जेका खुदा जे बंदन सां प्यार है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो लतीफ साईं अला ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, घणो इल्मु, घणो अकुल, घणी चालाकी, घणी होशियारी, ऐं हू ख़ुदि मूंखे मूं पिरनि ॿधी विधो ॿार में। बाबा पन बि कोन थो चुरे, ॿुधायो त इहो था त पन बि कोन थो चुरे मर्ज़ीअ खां सवाइ, ऐं जेको कुझु लिखियलु आहे सो ई कयो पिया। उन ते चए मूंखे मूं पिरनि ॿधी विधो ॿार में, उभा ईअं चवनि त मता पांद पुसाईं। मूंखे मुंहिंजे महबूब ॿधी पाणी में धिको ॾेई छॾियो, हाणे चयो ख़बरदार कपिड़ा न पुसाइजी। त तय त अॻु में ई थियल आहे, फ़ैसिलो त थियल आहे, पन बि कोन थो चुरे। पोइ जेको कुझु कयो पिया सो तय थियल स्क्रिप्ट ते पिया कयो, त पोइ हुनजो ॾोह कीअं आहे? बाग़े बेश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, इकबाल है, ॿियो को हुजे त ॿधी छॾियोसि। बाग़े बेश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। हाँ मसरूफ़ आहियां, कमकार में लॻो पियो आहियां, हाणे मुंहिंजो इंतज़ार कर। तंहिंजे करे लतीफ़ साईं इहे जेके कॉन्सेप्ट्स ॾिना आहिनि, इहा सॼी बग़ावत न आहे। जेॾो तुंहिंजो नाव बाझबो ॾींहुं मङा, हेॾो नालो दुनिया में वॾे में वॾो नालो त अलाह पाक जो आहे न। जेॾो तुंहिंजो नाव बाझबो ॾींहुं मङा, रीअ थंभे रीअ थूणीअ, तूं छपर तूं छांव, गुजाड़ो कहां तोखे मालूम सभ खां। छो चवां त मूंखे ही ॾे, तोखे सभु ख़बर आहे, सभु ख़बर अथई। इहो आहे लतीफ़, इहा सॼी शइ बग़ावत आहे, इहा सॼी शइ। ऐं माण्हू ॿियो छा चवंदा आहिनि? ॿी कहिड़ी रिवायत आहे? ॿी रिवायत आहे त जेकॾहिं तव्हां को घस जो कमु कयो था त हुनजी क़दुरु थिए, ऐं क़दुरु भला जॾहिं नथा थियनि त दोखो थो न ॾियनि। भला मुंहिंजे क़दुरु मौजूदु दौर नथो करे, ईंदड़ दौर करे। भला ईंदड़ दौर नथो करे सघे, मुंहिंजा घर भाती त मञी न, मिट माइट जग जान नथो मञे। मुंहिंजी घर, मुंहिंजो मुड़ुसु, मुंहिंजी ज़ाल, मुंहिंजा भाउर, अम्मा खे त ख़बर आहे न, बाबा खे त ख़बर आहे न, चङो माण्हू या चङी ख़ातून आहियां, उन त वास्तो ई कोन्हे। लिंगड़ियारी लूह में, लिंगड़ियारी लीड़ूं खणी हलंदड़, लिंगूं खणी हलंदड़। ॾिसो चरिया वीचारा मस्तु ॾिसंदा आहियो, कपिड़ा फाटल पिया हूंदा अथनि, रस्ते ते लिंगूं लीड़ूं गेलींदा पिया हलंदा आहिनि। मारवी पई चए लिंगड़ियारी लूह में, लूह माना जूह में, ज़मीन में, जहान में। लिंगड़ियारी लूह में जिनी ले थियास, पंहिंजे मारुनि लाइ तिनी तां तिर जेतरो पलक न पुछियासि। उन्हनि पुछियो ई कोन, जिन लाइ कयूं पिया उन्हनि क़दुरु कयो ई कोन। लिंगड़ियारी लूह में जिनी ले थियास, तिनी तां तिर जेतरो पलक न पुछियासि। झरोकनि झोरियो हियो, कोठिन आऊं कुठियासि। जेको माड़ियूं आहिनि न, झरोका आहिनि न, उन्हनि मूंखे अंदरां टोड़े छॾियो आहे। ऐं कोठिन आऊं कुठियासि, पोइ मारुनि मुंझ मुयासि, न त माड़ियुनि मारियसि कीन की। मूंखे मुंहिंजे मारुनि जे मुंझ, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, अलाए चङो माण्हू आहे, अलाए न, अलाए सही आहे, अलाए न, मां अलाए फिरी त कोन वई, उमिरि सां मिली त कोन वई। मारुनि मुंझ मुयासि, न त माड़ियुनि मारियसि कीन की। बग़ावत, ज़मानो तब्दील, ॻाल्हि ॿी, ॻाल्हि ॿी। भला हींअर न त पोइ वरी ॿिए जहान में तो न चए थो जे तूं काल मुई त काल ई गॾीअ पिरीअ खे। इतफाक़ आहे न, मर पाण मरी वञी आहे। जे तूं काल मुई, मुईअ छो जे शर्त आहे, जे तूं काल मुई
त कालई गॾीअ पीअ खे कॾहिं कान सुई त सघी गॾी सजणे। सॻियूं सजणनि खे मंज़िल आहे, मंज़िल ते पहुची वियासीं, कुझु कोन थियो। मंज़िल पहुचण खां अॻु में माण्हू फलाणो हली वियो, मुसाफ़िर हलियो वियो। उहो इब्राहिम लिंकन ते मशहूरु नज़म त वाल्ट विटमिन जी, माय कैप्टन पढ़जो वञी, वाल्ट विटमिन जी। त कैप्टन जॾहिं पहुतो, ग़ुलामी ख़तमु करे त जहाज़ टुकड़ा टुकड़ा थी वियो। तंहिंजे करे इहो जेको कॉन्सेप्ट्स आहिनि, उन्हनि कॉन्सेप्ट्स खे लतीफ़ चैलेंज कयो आहे। सॼी रूए ज़मीन जा जेके उन वक़्त जा कॉन्सेप्ट्स आहिनि, उन्हनि खे लतीफ़ चैलेंज कयो आहे। उन्हनि लाइ उन्हनि खे रीकंस्ट्रक्ट ऐं रीडिज़ाइन कयो अथसि, उन्हनि खे वरी अॾियो अथसि। टेई परचा पाण में। इन खां वधीक अदबी मिसाल ही वञी पढ़ायो सभिनी खे, सॼी दुनिया में जेके वॾा शाइर आहिनि, शेली, कीट्स, बायरन, वॾा उहे बि ज़बरदस्त आहिनि। कालिदास, शबनम साहिबा हुजे असां ॿुधायूं, कबीर, कबीर जी सवेल ॻाल्हि थी न, ताल सूक कर पत्थर भइयो हंस कहीं न जाए, पिछली प्रीत के कारणे पत्थर चुन चुन खाए। कबीर है। तला सुकी हुआ है, हंस वेठो है। लतीफ़ हिन खे ॿिए नमूने पेश कयो आहे। सर सुके साल थिया हंज हरियो ई पेर। पाणी वियो सुकी ऐं हंज जो पेर अञा ताईं आलो लॻो पियो आहे। सर सुके साल थिया हंज हरियो ई पेर, कंग वेचारो केर जो रसे इन ई रमज़ खे। कंगनि खे किथे ॻाल्हि सम्झ में ईंदी त छा पियो थिए, छा न पियो थिए। तंहिंजे करे लतीफ़ साईं हिन सरज़मीन ते नवां मॉडल्स जोड़िया आहिनि। पाण उन्हनि मॉडल्स खे इम्प्लीमेंट नथा करे सघूं, उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पाण उन्हनि खे अमल जे मैदान में नथा आणे सघूं, उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पर मॉडल्स जुड़ी विया आहिनि। ऐं ताने सूधी तुंहिंजी, ऐं ताने समेत तोसां गॾु आहियां। ताने तानम इल्ज़ाम, तूं तानो ई मूं, सो की सरियो सूं जो सरतियूं कंहिं न सरियो। तुंहिंजे ताने सां ऐं तुंहिंजे ताने सां ॿधल, ऐं तुंहिंजे ताने खे पंहिंजे लाइ फ़ख्रु थी सम्झां, ऐं मुंहिंजे लाइ तूं तानो ई, ऐं उन ताने में मूंखे इहो तूं इल्ज़ाम ई महणो ई, उन महणे मूंखे उहा मंज़िल ॾिनी आहे जो कंहिं ॿिए माण्हू खे न मिली आहे। तुंहिंजो महणो लॻण मूं ते वॾो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे। जे हर लोक झप करे ख़ामोशी आहे, जे हर लोक झप करे ज़रो जाग न होए, ओहिर अचो अदियूं मूंखे पह पिरियां जो पोइ। सभु सुता पिया। जे कचो चूनम कोए त मर्क भायां मीहणो। जेके माण्हू इल्ज़ाम था आणनि उहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे, मर्क आहे, फ़ख्रु आहे। मीहणो जेको न आहे उहो मुंहिंजे लाइ फ़ख्रु आहे। तंहिंजे करे लतीफ़ साईंअ जे हिन दौर में मूंसां हींअर टेलीविजन चैनल हिकिड़े कंहिं पुछियो मूंखां, मूंखे चई लतीफ़ साईं ते प्रोग्राम पियो थिए, मुंहिंजो ज़बरदस्त कमु आहे। पर मूं चयोमांसि त रमज़ान जे महीने में या नॉर्मल हालतुनि में ॻोठ में को चौकीदार हूंदो आहे, उहो लठ खणी पियो हलंदो आहे, या चवंदो आहे रोज़ा सहरी का टाइम हो गया है, या कॾहिं कॾहिं चवंदो पियो आहे जागते रहना। लठ हथ में हूंदी आहे, ठा थंभे खे या ॿियो दरवाज़े खे, त माण्हू उथनि। मुंहिंजो लतीफ़ साईं अथव उहो चौकीदार, उनजे हथ में अथव पंहिंजे फ़िक्र जी लठ। सिंध जेॾी महिल भाड़ी थी थिए लतीफ़ जी लठ थी फिरे, जागते रहना, जागंदा रहो। उथी खड़ा थियो, तयारु थियो, वेंदव हली। तंहिंजे करे हिन दौर में जेके रिवायती तरीक़ा आहिनि उन्हनि जे साम्हूं बीह रहण लतीफ़ आहे। हिन दौर में जेके माण्हुनि जा कंपल्शन्स आहिनि, माण्हुनि जा दबाव आहिनि, उन्हनि हीअ न कयो, हीअ न कयो, हीअ छो कयो, उनजे साम्हूं अखि उल्टी धार, वहो उबतो आम खां। जे लहवारो लोक वहे तूं ऊंचो वह ओभार, मंझा नोच निहार पर पुठीरो प्रियंदे। ख़ामोशी सां ईअं प्रियंदा पोइ ते हलंदो वञ, ॿिए खे लखाई न थिए, ॿिए खे ख़बर ई न पए। माणक चूणो जिन लिकी अंडरग्राउंड, ख़ामोशी सां वॾे ॾेखा खां सवाइ। माणक चूणो जिन हंज हुज़ूरी से, चिलर में चौंबहणी मच्छी खीन नए। लोकन लख्या थे तेला भुणन बघन गॾिया। कंहिंखे ख़बर न पए आहिनि हुज़ूरी हंज, पर बघनि सां गॾिया पिया हलनि। भले पिया इल्ज़ाम लॻनि त बघनि, हीअ बि बघ आहे, हीअ बि बघ आहे, हीअ हंज हुज़ूरी आहिनि। ऐं लोकन लख्या थे, माण्हुनि खे ख़बर न पवे त हीअ केरनि, तेला भुणन बघनि गॾिया। तंहिंजे करे बघनि सां गॾिजी पिया हलनि, बघनि सां गॾु लिका पिया आहिनि त कंहिंखे ख़बर न पवे त हीअ केरनि।
तंहिंजे करे रिवायत शिकन थियो। लतीफ़ जे पैगाम खे सम्झण जो मक़सदु आहे रिवायत शिकन, रिवायतुनि जे साम्हूं बीहण। रिवायतूं सुठियूं हुजनि त फर्स्ट क्लास, पर जेके मुदे ख़ारिज रिवायतूं, जेके सिंध जे समाज जी तरक़ी रोके वेठियूं आहिनि, इल्म, मेरिट, जुस्तजू, नयूं शयूं सिखण। लतीफ़ साईं पंधी पंध सॼी दुनिया पियो हले, उनखे वाह वाह पिया कयूं, पाण तां निकिरी कश्मीर कंध कोठी कोन था वञूं। कराची में घणा वेठा आहियो जेके गुज़िरियल 2-3 सालनि में को विया आहियो नंगर पार करे, या कश्मीर या कंध कोट या कंबर शहदाद कोट या केॾा नए देर केरु विया आहियो? वेठा उते ई आहियूं। डूंगर न डोरे पाण सभिनी लाइ। तव्हां लाइ कोन थो चवां, त भला माण्हू हुयो पंहिंजे लाइ। डूंगर न डोरे सिकण जूं सधूं करे, घर वेठे घोरे मथां पिरीं जिंदड़ो। वेठी घर आहे, पिरीं तां जान कुर्बान आहे। तंहिंजे करे लतीफ़ साईं उन्हनि पाण त न, पाण त भला आहियूं, पर जेके अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ख़बरूं ठलियूं सॼो ॾींहुं सोशल मीडिया वठ हणणा, उन्हनि खे लतीफ़ साईं चए थो वञो पंहिंजी सिंध त ॾिसो, पूरो पाकिस्तान ॾिसो। सॼो पाकिस्तान पंहिंजो आहे, सॼो साउथ एशिया पंहिंजो आहे, सॼी दुनिया पंहिंजी आहे। रमी वयूं रोम ते ऐं काबुल खे कंधार, सो रोम ऐं इस्तंबुल ऐं काबुल ऐं कंधार ऐं दिल्ली ऐं दक्कन ऐं गुड़नार जूं ॻाल्हियूं पियूं थियूं उन ज़माने में। हिन ज़माने में कराची खां निकिरी बंबोर कोन था वञूं, ऐं ख़बरूं पंहिंजूं वॾियूं आहिनि, हवाला पंहिंजा वॾा आहिनि। तंहिंजे करे हवालनि खां निकिरूं, ऐं जेके परॾेह में दोस्त रहनि था उहे अचनि था सिंध में, उहे सिंध में अचनि, कराची हैदराबाद ज़रूरु दावतुनि खे टाइम ॾियनि। ईंदा आहिनि न डायस्पोरा जा ओवरसीज़ सिंधीज़ ईंदा आहिनि, पाकिस्तानीज़ ईंदा आहिनि। कराची, हैदराबाद, ठीका, लाड़काणो, सखर, शिकारपुर वञनि हलिया, गौसपुर, करमपुर हलिया वञनि, छाछरे हलिया वञनि, अछड़े थर, उते वञी ॾिसनि त माण्हुनि सां हालत कहिड़ी आहे, पढ़ाई, इल्मु। तंहिंजे करे लतीफ़ साईं पैगाम आहे। आख़िर में इलाही देरि थी वई आहे, अॻ में तमामु तफ़सीली ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि, पर प्यार में जेको मुतालबो था कयूं न, त ही शर्तूं हुजनि। शर्तूं बर्तूं हूंदियूं कोन्हनि, महबूब में ई कोन हूंदियूं आहिनि, पर वतन सां ऐं क़ौम सां ऐं पंहिंजे समाज सां, उन सां वरी कहिड़ियूं शर्तूं, कहिड़ा लेखा? पंहिंजे माण्हुनि सां लेखा कबा आहिनि छा? ससुई खे चयूं न, पाण सभु चऊं था हुजो, अदा तूं हलंदे, छा चवंदा आहियूं? अदा हलंदे, हेॾां वञा तूं कराची हैदराबाद हलंदे, मूंसां गॾिजी हलंदे। वञा तूं प्रोग्राम में संग, अॼु छा ख़्याल आहे, हलूं? अॼु हलूं? केरु गॾियो हले? सर्तियूं सॼी सुञ, भॼाइण वारा कम न हल। तूं सर्तियूं तूं मथां हली, पाण तूं मेड़ अच 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 मूंसां गॾियो हल। सर्तियूं सॼी सुञ, मथां का मूंसे हले, पाणी नाहे पंध घणो, अॻियां राव सॼी रुञ, मथां मरी उञ का ॾे पारा तो प्रिय खे। मथां उञ मरो ऐं पोइ मुंहिंजे महबूब खे पिटियो, अॻियां कुझु कोन अथव, अॻियां भींग लॻी पई अथव, हलणो अथव त हलो। सो जेके शर्त शुरूत रखो था, उहे शर्त शुरूत महिरबानी करे न रखो। हिकिड़ी 2 सिटूं आख़िर में लतीफ़ साईं जूं, आऊं त हुन ते अमल करण जी कोशिशि कयां थो। कोताहियूं आहिनि पाण सभिनी में, मूं में आहिनि, तव्हां खां वधीक हूंदियूं, तव्हां में बि हूंदियूं, पाण सभिनी में आहिनि। हाणे हू पैगाम में आऊं त हुन ते सोचींदो आहियां छा चई वियो आहे लतीफ़ साईं। आऊं चवंदो आहियां मुर्शिद साईं, मुर्शिद हुन सेंस में न, मुर्शिद जा वरी ॿिया सेंस उहे न, उन्हनि खां बेज़ार आहियां। पर उहो जेको उस्ताद वारो कॉन्सेप्ट, उन में छा चई वियो आहे सोचजो। हबीबन हेकार, हिकिड़ो दफ़ो रोज़ न, रोज़ फोन, न को वैलेंटाइन डे, न को मुबारकूं, न को सुबुह जी पोस्ट, न को ख़बर, न को चार, न का अवी जाॻिया आहियो कोन जाॻिया आहियो, राति जो केॾी महिल सुताओ ख़बरूं चार, हला केॾां थो वठी हली, मूंखे वठी हल, गाॾी में जाइ आहे कोन्हे, पेट्रोल अधोध कंदासीं। हबीबन हेकार जो मंझां महर सॾु कयो, सोमूं सभु ॼमार, ओरण उहो ई थियो जेसन।
महिरबानी अयाज़। मुंहिंजी पंहिंजी राय आहे, पोइ दोस्त हुन सां एग्री कनि या न कनि। हिते घणो कुझु ससी जे बारे में ॻाल्हायो वियो आहे ऐं घणो करे ससी जे ई असांजा स्कॉलर्स रिफर कनि था। आम आहे त ससी शाह ॻाई आहे सिंध जे हवाले सां। उहे सूर जेके ससी ॾिठा ऐं उहे सूर जेके शाह लिखिया, अॼु बि सिंध उन्हनि सूरनि में आहे। ऐं दिस इज़ a clairvoyance that he's spoken about. असां उनखे न सम्झो आहे। इहे सूर असां सां हलंदा रहंदा जेसि ताईं तव्हां चयो त अंदरि तव्हां पाण न बीहो पंहिंजी जाइ ते। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर फहमीदा हुसैन खे। फहमीदा खे तारुफ़ जी मोहताज न आहे। मूं ते हिकिड़ो थोरो इहो कयो हुई त जॾहिं मूं चयोमांसि त हिन किताब जा जेके सिंधी अंग्रेज़ी बैत जा जेके अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जा जेके सिंधी बैत आहिनि उहे महिरबानी करे ॻोल्हे ॾियो, त तुर्त ई कमु इहो करे ॾिनई। मुंहिंजी नंढी भेण आहे, वॾे एतिराम सां ऐं फहमीदा खे मानव वारा साथियों, अयाज़ जे धुआंधार तकरीर खां पोइ ॻाल्हाइण थोरो डपु पियो लॻे। मुंहिंजो पंहिंजो बच्चो आहे, मुंहिंजे ॿारनि वांगुरु आहे, मुंहिंजे बच्चनि वांगुरु आहे। मूं किताब ते लिखियो आहे, Translation of poetry may be defined as transcreation in another language, because the translator has to feel the depth of emotions, absorb several layers of meanings, understand figurative language with metaphors having typical cultural context of a nation, and then create such a poem in the target language that conveys the essence of the original poetry without losing its aesthetic beauty and artistic value. So we can say that translation of great poetry needs research, practice, and creativity, and most of all, great passion. When I started reading the book, I saw myself by Shabnam Virmani and Vipul Rikhi. It occurred to me that they have conducted thorough research before transcreating Shah Latif's poetry with great passion and creative ability. The purpose of writing this book seems to me an effort to get the glimpse of a whole new world beyond linguistic boundaries, and that was because the authors understand that the people on the two sides of the border share the legacy and spirit of mysticism. The Bhakti on one side and Sufism on the other. Kabir and Mirabai there, and Shah, Latif and Sachal Sarmast here. Shabnam and Vipul claim to have come across the great poet of Sindh in the land of Kutch in India, where he resides in the hearts of his Kutchi Sindhi followers and lovers, who recite his abiyat and sing his vais with great passion and admiration. And through them, both of these authors claim to have traversed through the world of the poet and with him through their own selves, as if they had entered into the world of their own souls. They felt as if they were traveling with Sasui on the road, or with road to Cage, or with Sony floating on an unbaked pitcher in the mighty river. They even saw themselves looking for wandering yogis of Ramkali on their way to Hinglaj in their spiritual quest for salvation,
after detachment from the worldly relations. This travel inside one's own self is the main theme of this book, where each one of them, Shabnam and Vipul, individually chant, "I saw myself." Through this travel, they have tried to find their eternal connection to the absolute truth to which they want to ultimately unite. Through the Risalo, they claim to have walked into the universe of Latif that leads them to the path of the beloved through Sufi thought via Shah Jorag. And I ask you, today's audience in this hall, doesn't that sound familiar to you? Shah, the Sufi, who takes you to the spiritual journey within. Shah, the Murshid, the Peer, the Buzurg Sayyid, who created and recited his verses that purify your souls, that make you aware of yourself and lead you to your Creator. Khud shanasi ma khuda shanasi. Shabnam and Vipul also felt the same way, and I wondered why they were not led to the realities of life. Why did they only think about the metaphysical and not the physical world in which Shah lived or we live today? Is Latif not a poet of this world? Is he not a humanist, a social reformer, a thinker who is the ultimate guide of people, especially of Sindhis? Did he not bring about enlightenment in the Sindhi society, which was the Sindhi society which was rigid socially, politically and religiously in that era? Yes, he was a Sufi, there is no doubt about that. But in my opinion, he used Sufism as a means to enlighten the people of his homeland. For him, it was a social movement against intolerance and discrimination on the basis of caste, creed, faith, gender, etc. He preached equality, love, and peace for humanity, rejecting the rigidity of the clergy of his times. But then I proceeded further reading the book. I found out that the authors did see that aspect as well, which is evident from these words on page 8, and I quote, "The Risalo is a poignantly ultimate chronicle of Sindhiyat and its multi-layered topographies, literary, socio-political, cultural, emotional, physical and metaphysical," unquote. Shabnam and Vipul seem to have been captivated in the dream world of Latif through his rag. They roam in this universe and feel as if they could also converse with the land of Sindh, its mountains, trees and clouds, just as Sasui did. Dungara das supiriya jo kafan diye ko. O mountain, why don't you speak? Tell me if my beloved passed this way. Vadho kima vana ucha dungara mathyo. Trees stop growing, mountains don't be tall. They seem to be impressed by the personification of nature in Shah Latif's poetry. In this book, the authors have also appreciated the strange and unique quality of the poet speaking through his female characters, Sasui Soni, the 7 Surmis, or heroines, the legendary women of this land. The pain, suffering, and longing expressed through them touches the hearts of the audience. Through this book, we have also been introduced with one more legendary woman, Ram Kali. As the 8th Surmi of Shah Latif, on page 96, it is written that, I quote, "Although Ramkali is not one of the 7 heroines of Shah's verses, the details of her legend come to fore through Abdullah Bhai, an oral scholar of Kutch. According to him,
Ramkali was a Sindhi princess. या हिकिड़ी नई ॻाल्हि आहे जेका हिन किताब मां मूंखे मिली. Who was a young girl who wanted to learn tilsum or magic. Her father, the king, summoned his courtiers. They informed him that the only people who could teach her magic were the yogis who belonged to Nath Panth. The yogis were invited, who pitched their camps on the palace ground, lighting their dhunis or log fire, symbolic of a fire they keep burning within. The young princess eagerly ran to them each morning to learn some secret arts. The yogis gave Ramkali a powerful glimpse into her spiritual practice and philosophy of detachment. Bukha vidaun bugre, jogi kanda junya, talab narakhan tamaji, otyo pian unya, lahu tin agi sunya, vasau ke vejhathya. And they translate, they fill their warehouses with hunger. The yogis care not for food, they guzzle down thirst. However, one day the princess woke up to find that the yogis had disappeared. The only signs of them were the smoldering dhunis. In Sur Ramkali, she laments the sudden departure of the yogis. After that, she left her high palace and became a yogan. Yeah, jogan. Bari jin bari aau na jiyandi unare. They have lit a fire in my soul. I cannot live without them. Unquote. In my opinion, this Ramkali may be a mythical character like Mirabai, as nowhere in Sindhi literature, whether oral or written, we find such a character or legend. According to Professor Kalyan Advani, Ramkali is a classical Indian raga, whereas N.A. Baloch calls it Sindhi Ramkali, sung along with Jog Rag. The authors of this book have compared the Vairag or the detachment of Shah Latif with that of Ramkali, when he had left home with the yogis, but in the end they had abandoned him. According to them, उनखां पोइ असल में ॾाढो सुठो ॻाल्हायो वियो आहे. मुंहिंजो ॻाल्हाइण ख़बर न आहे ऐं कोविड में का प्रिपरेशन कान्हे, मथां अयाज़ ॻाल्हाए ऐं उहो त ॾाढो मुश्किल कमु थियो वञे. पर मुंहिंजे लाइ डॉक्टर फहमीदा हुसैन खां पोइ ॻाल्हाइण बिल्कुलु ईअं आहे शाह साईंअ ते जीअं आउं सिज जे हेठां ॾीओ ॿारियां. पर मथे ते आई आहे. प्रोग्राम जॾहिं मां शुरू थियो, डॉक्टर अयूब शेख, ख़ुदा खुन साहब भी थोड़े इनडायरेक्टली ऐं वरी ज़ाहिर आहे कि अयाज़ उन रेफरेंस खे तमामु घणो खयो. उहो आहे सभु हिननि दीवारनि खां ॿाहिरि जेके हिन वक़्तु उॾाम त ॾिसो, तसवुर थो करे हीअ आऊं बीठो आहियां, हीअ आऊं तख़लीक़ थी चुको आहियां, हीअ मुंहिंजे साम्हूं मूंखे तख़लीक़ करण वारो आहे. हाणे मूंखां पुछे पियो, हाणे ॿुधाए छा मूं तोखे तख़लीक़ कोन्हे कयो, ऐं आऊं तॾहिं खां सोज़ में मुब्तला आहियां, तख़लीक़ जे सोज़ में मुब्तला आहियां. तन में उहो सोज़ लथल आहे. उहो सोज़ छा आहे? उहो सोज़ हिजर जो न आहे. उहो सोज़ आहे जंहिं शाह साईंअ खे धरतीअ सां इश्क सेखारियो. उहो सोज़ ई आहे जंहिं शाह साईंअ खे धरतीअ जे माण्हुनि सां इश्क सेखारियो ऐं करायो, ऐं जंहिं असांखे उहो इश्क सेखारियो. साॻे वक़्तु जेका उॾाम आहे संदसि, असीं चई नथा सघूं कहिड़ी जाइ आहे. को शाइर आहे
शाह साईं जहिड़ो शाइर आहे, खुलियल आसमान हेठि वेठो आहे, भिट ते वेठो आहे, ज़मीन सिंध जी पंहिंजे पेरनि हेठां अथसि, उन ते वेठो आहे, मथे ते आसमान अथसि जेको सिंध ते ताणियल आहे। बाक़ी महलनि जो शाइर त कोन्हे, महलनि ऐं माड़ियुनि जो शाइर ई कोन्हे, उहो काइनात खे कीअं थो ॾिसे, असां कीअं था असां हुनजा माग मकाननि जो अंदाज़ो ई नथा लॻाए सघूं। को चए थो त एक कसर दर लख, एक कसर दर लख, कौड़े कणस गिड़खियूं, जेॾां करियां परख, तेॾां साहिब साम्हूं, जेॾां करियां परख। हुनजे माग ऐं मकाननि जो अंदाज़ो ई नथो लॻाए सघिजे। हू पंहिंजे धरतीअ ते वेहे थो, काइनात खे ॾिसे थो, कौड़े गिड़खियूं आहिनि, लखें दर आहिनि, जेॾां निहारे थो ओॾां संदसि सोच, संदसि ख़्याल जी उॾाम। मौजूदु आहे, जेॾां निहारे थो ओॾां साहिब मौजूदु आहे। छो शाह साईं लामहदूद आहे। जेकॾहिं असां ॾिसूं था हुनजी सोच जी उॾाम जेका आहे उहा लामहदूद आहे। असां घणो ॻाल्हाए चुका आहियूं, आख़िर में हिकिड़ी पॉइंट ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदुसि, उहा आहे शाह साईं जी पीरी मुरीदी, शाह साईं जो मुर्शिद हुअणु, शाह साईं जो गादी नशीन हुअणु, शाह साईं जे नाले ते दरगाह जो पीरी मुरीदीअ वारो इस्तेमालु हुअणु, असांजो इहो सम्झणु त हीउ हिकिड़ो पीर आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे, जेकॾहिं पाकिस्तान में सिंध जे मामले में को चैलेंज आहे इस्टेब्लिशमेंट खे, पॉलिसी मेकर्स खे, हर दौर में रियासत जे जेकॾहिं को चैलेंज आहे उहो शाह साईं आहे। शाह साईं खे असां खां न कर जे शाह साईं फुरे सघनि त अधु कमु त थी वञे। शाह साईं खे फुरण जो हिकिड़ो तरीक़ो जेको ख़ासि करे 1947 खां पोइ राइज कयो वियो, उहो शाह साईं खे पीर बनाइणो, रूहानी पीर बनाइणो। रूहानी त आहे, रूहानी उॾाम जो त हुनजो को एंड ई कोन्हे, पर हुनखे पीर बनाइण, हुनजे मथां पड़ विझणु, हुनजे दरगाह खे पीरी मुरीदीअ लाइ इस्तेमालु करणु, इहा हिकिड़ी कोशिशि रही आहे। छो हिकिड़ो अहिड़ो शाइर जेको अयास चवाणी लठ खणी थो हले, जाॻंदा रहो जाॻंदा रहो, अञा तव्हांखे झूठो ई न आयो आहे, सदा बुलंद थो करे जाॻंदा रहो। ऐं अहिड़ा अहिड़ा जे मेड़ाका थियनि था, अहिड़नि मेड़ाकनि में जो हुन ते ॻाल्हायो थो वञे। केरु आहे जेको शाह साईं जे नाले ते इख़्तिलाफ़ ऐं बग़ावत जे ॻाल्हियुनि खे हिते चई सघे त तूं कुफ़ुर थो ॻाल्हाईं? केरु ई न आहे। कमाल आहे इहो शाह साईं जो। ऐं हाणे जॾहिं लफ़्ज़ खुटनि था तव्हां भाए थो त पोइ त मौसीक़ी जाइ वठी सघे थी। इन में आउं रुॻो शबनम जो हिकु ट्रांसलेशन आहे उहो पढ़ंदुसि। शबनम जो कोन्हे, ही आउं भाए थो मौलाना रूम जो आहे। आई सेड माय आई लो थी वियासीं। हाणे रफ़ीम खे छा सॼी राति छिकूं ॾिनई। सुबुह जो आउं ऐं मुमताज़ मिर्ज़ा वियासीं, हिन जे लाइ विस्की जी हिकिड़ी बाटी आंदीसीं, असां हिनखे ॾिनीसीं। शाम जो असीं जॾहिं मोटी आयासीं त हे वेठो हुजे, को नशो न हुजे, सॼी बाटली ख़तमु करे चुको हुजे। छिकूं नक मां पाणी। ख़ैर अस्पताल वठी वियासीं, उते बाईपास थियो हिनजो। ऐं मूंखे इन विच में हिनजी बैग बि अची वई। मूंखे हुननि डॉक्टर्स लिखी ॾिनो त ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट ऐं ही हैज़ ओपियम, ही इज़ हियर इन द हॉस्पिटल।
आउं जॾहिं वियुसि त PI वारनि जो ख़ुदा भलो करे, उन्हनि मूंखे चयो, मूं चयो आउं डिक्लेयर नथो कयां, पेती खणी निकिरी थो वञा। मूंखे चयो न डिक्लेयर कर। आउं वियुसि, पेती नंढड़ी खणी मूं टेबल ते रखी, माई हिकिड़ी वेठी ते मूंखे चयो त वॉट इज़ इट, वॉट यू हैव टू डिक्लेयर। मूं चयो ओपियम। त जीअं वेठी त टिप ॾिनई, चई वॉट, मूं चयो ओपियम। चई वेट, ॿिनि पुलिस वारनि खे वठी आई, कागज़ खोले मूंखां आॾी पुछाऊं कयूं। थोरी देरि खां पोइ मूं चयोमान तव्हां मूंखां छो था पुछो, आई एम हेल्पिंग अ फ्रेंड, आई ब्रॉट दिस हियर, हीअ हुनजो सर्टिफिकेट आहे। चयूं ठीकु आहे, पर अथसि किथे, उहो पेती ॻोल्हे 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 थकिजी पिया, न मिलियसि। मूंखे न ॿुधायो त हिकिड़ो को खीसो आहे, हुन में पहिला सो कढी मूं ॾिनीमान। ऐं मूं चयोमांनि हाणे हिकिड़ो मूंखे रसीद ॾियो ताकी आउं जॾहिं वापसि वञा त हीअ मूंखे मिले। चतो त दिमाग़ु ख़राबु थियो, हीअ त असीं साड़ींदासीं। ठीकु आहे। ऐं वियुसि पियो त मूंखे वापसि छॾियईं। मूंखे चयईं आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मूं चयो यस, व्हाट इज़ द क्वेश्चन। चयईं यू से दैट दिस मैन took opium with him to America. मूं चयो यस। चयईं you came back with him. मूं चयो यस। चयईं how did he get through the American customs? So इहो हो अलण फ़क़ीर। ही अलण बिल्कुलु ईअं हो जीअं मुंहिंजे घर जो भाती हुजे। जी to where? Yes. Okay, I took him there, and I don't know whether you are. I'm narrating that same thing or something else. I took him to a doctor. You are referring to the chap whom I informed about the opium. No, that's here. Who this attack थियुसि, वठी वियोमांसि हिते डॉक्टर चेस्ट फिजिशियन हुजे, उन ॾिठुसि ऐं तपास करे मूंखे चयईं त हिन जा जेके फिफड़ आहिनि से ख़तमु आहिनि, हीउ न ॻाए सघंदो ऐं हिनखे ख़बर न आहे केतिरो वक़्तु जीअरो आहे न आहे। सो डॉक्टर हुनखे तपास करे जीअं हीअं वरियो ऐं पुठि ॾिनई त अॾण सदा आई। उन सदा ते उहो बीह रहियो, पोयां मुड़ियो, ॾिठईंसि, मूंखे चयईं ये नहीं गाता है, इसका दिल गाता है। So Alan, Yusuf, Sohrab, Abdul Ghafoor, Abda, ये सब सिंध जी सोहां आहिनि। अलाह से हिननि खे जेके विया तिन खे जन्नत नसीब करे, आपदा खे अलाह से हयाती ॾे, असीं ईअं ई ॿुधंदा रहूंसि, ख़ुदा ख़ुशि रखेसि। हिन खां पोइ मांझी फ़क़ीर ऐं मांझी फ़क़ीर खां पोइ सनम मालवी, उनजी का अनाउंसमेंट न थींदी, हू पाण ई तव्हांजे साम्हूं ॻाईंदा। ऐं तव्हां सभिनीनि जो थोराइतो आहियां, अयूब शेख जो बि, आर्ट्स काउंसिल जो, महिमाननि जो जेके अॼु हिते आया आहिनि ऐं जे असांखे इज़त बख़्शी आहे, वॾी महिरबानी। पाणी जल जलाल, पाणी जान जमाल, पाणी जल जलाल, पाणी जान जमाल, पाणी सूरत सुपरी, पाणी हुस्न कमाल, पाणी पीर मुरी थे, पाणी पाण ख़याल, सब सबोई हाल, मझाई मालूम। मुर्शिद लतीफ़ सरकार जी भाई।
मोटाईंदे मारवी अला भलू मोकल ॾे त मलीर वञा मोकल ॾे त मलीर वञा अल्लाह सांगिन कान सिकायो अथई ओ सांगिन कान सिकायो अथई छो मुंहिंजो रूहड़ो रंजायो अथई छो मुंहिंजो रूहड़ो रंजायो अथई अलाह छो मुंहिंजो रूहड़ो रंजायो अथई छो मुंहिंजो रूहड़ो रंजायो अथई
में मखदूम सन मंसूर बल अग भी कुठो अवां जे इश्क में मखदूम सन हजूर हा अजब या वो हजूर हाजुर हजूर हाजुर ये गंध कटारी कबूल पे अवां जा आशिक हजार हैं अवां जा हजार हैं मौला सिरड़ो निमाए असां टावर न केराया असां माण्हू न माराया असां टावर न केराया असां के तालिबान न कोई थियण था चऊं असां के न कोई थियण था चऊं अज़ल खां अमुन जा ॿुधायव का ॾिठव खां अज़ल खां अमुन जा ॿुधायव का ॾिठव खां असां को रूस खे टोड़ियो असां को रूम खे बो असां को रूस खे असां को रूम खे बो हतातन खे हथ समझायो हथन सां मुल्क जन हतातन खे हथ समझायो हथन सां मुल्क जन अल्लाहू 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 साबित कदीम ओ राजी रब्बानी रूह को शुरफा भी है यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी ओ मरना भी है नुकसान भी नफा भी है यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी
हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो, तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो, तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबू से हया देखा है। तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबू से हया देखा है। हमने देखे हैं अहरामों में छुपे हजारों इब्लीस, अरे हमने मैं खाने में 100 बार खुदा देखा। बांट दिया इस धरती को, हो बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। हो क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तोड़ा मंदिर में आज नोही भीगे पड़िए एक दूजे के अंदर में। आज भी सदियां मांगो कुछ नहीं जानता मस्जिद और मंदिर का। लहू तो तेरा मेरा लगदा तेरे मेरे खंजर में। रब करे तू मंदिर वांगो वेखी मेरी मस्जिद नो। हो राम करे मैं मस्जिद वांगो देखा तेरे मंदिर को। हो पिपुर में परमेश्वर, पिपुर में परमेश्वर तकी मपुर में बियो। निवड़त कई तो निम जी का कटो कह कयो। इस्लाम जे अल्लाह जो तवरी कुफ्र कह कयो। मस्जिद ऐं मंदिर में परे हिक दियो। हो रोहे की पियो हलत अची हिन खल्क में। को रहमान जे पासे को भगवान जे पास, को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे। ओ मुझो सजदो उनयक आ, मुझो सजदो उनयक आ। को रहमान जे पासे को भगवान जे पास, को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे। बन के बुधाए छड़ तमखे खौफ कोने को। 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 मुझी हालत नहुरन सा, मुझी हालत नहुरन मान जे पासे को भगवान जे पास, को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे। अरे जन्नत में भी पहुंचकर, जन्नत में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं। जन्नत में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं। ओ तू के ये और जगह है मकाम यार नहीं। बुधाए मुखे खौफ कोने बन के बुधाए मुखे खौफ कोने। मुझी हालत नहुरन सा, मुझी हालत नहुरन सा, मुझी हालत नहुरन सा। लकी के नमान जे पासे को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे, को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे।
सदे असांजो रूह रोए थो तव्हांजूं आदतूं सदे असांजो रूह रोए थो तव्हांजूं आदतूं सदे असांजो रूह रोए थो तव्हांजूं आदतूं सदे असांजो रूह रोए थो इहो तूं चोच मज़हब वा इहो तूं चोच मज़हब वा इहो तूं चोच मज़हब माया शैतान जे पासे तो रहमान जे पासे तो भगवान जे पासे तो रहमान जे पासे तो भगवान जे पासे रफ़ीकन खे बरंदिश रफ़ीकन खे बकावड़ा रफ़ीकन खे बरंदिश रफ़ीकन खे बकावड़ा रफ़ीकन खे बरंदिश रफ़ीकन खे बकावड़ा रक़ीबन खे बरंदिश रफ़ीकन खे बकावड़ा ॿुधा हाणे वञा आऊं ॿुधा हाणे वञा आऊं कहिड़े जहान जे पासे को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे असांजे दीन ऐं ईमान जो दस्तूर पंहिंजो वा असांजे दीन ऐं ईमान जो दस्तूर असांजे दीन ऐं ईमान जो दस्तूर पंहिंजो वा असांजे दीन ऐं ईमान जो दस्तूर पंहिंजो
मदद पहिरियों कलाम पेश कयां थी हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो पचन शाल पवार।
नाज पर लेकर चलो मूसा, इस तेरी गली में ए दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ, हैरान हुआ हैरान। से